Okay. Okay. Thank you. So, should I stop? Yes, ma'am. Okay. Thank you. So, good morning, everyone. We welcome you all to the 9th session of the Quality Circle program, which is ongoing since now numerous months. And this program is primarily a national level principles development program on NAC for higher education institutions. As you all know that initially we had started this as a principles development program, and then with its popularity, a lot of people in the capacity of various stakeholders, they wished to join this session because NAC is basically a team effort, and it involves not only the leadership but also the faculties who are working for a good accreditation rank. So we at the CTEF Delhi NCR chapter and the CTPD India together have jointly worked out on this quality circle session, which is primarily to pick up quality issues specifically in higher education institutions. So for today's session, the 9th session is on a very, very important aspect of NAC, which is a part of criterion 6, that is on the governance and leadership. And the topic for today's session is academic and administrative audit, also known as AAA, and what is its role in enhancing quality in higher education institutions. Today we have with us Dr. Anjali Shokeen. She is the key speaker for today, and we welcome you, madam, on behalf of the organizing team. You are also a part of both these organizations, so I think it is also a homecoming for you. And we will be today learning and enhancing our knowledge, as well as we will be engaging in an interactive session with Dr. Anjali ji to know what is the academic and administrative audit process, how it is so important to assure quality in higher education institutions in terms of academic programs or teaching learning process, research, administrative practices, and maybe we can say overall governance, as well as we will also request ma'am to share with us some practical strategies on how every educational institution, higher education institution, can prepare effectively an audit, what are the documents required, and how one can navigate this audit process smoothly and effectively. So with these objectives in mind, we are here before you on the 2nd of July for this session. I am very happy to welcome my dear colleague, the co-convener of today's Quality Circle program, Dr. Reena ji, to please take forward the session. Welcome, Reena ji. Thank you so much, Tanya ma'am. And now it is my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Anjali Shokeen ma'am. Ma'am is Assistant Professor in University School of Education and Associate Director, Directorate of International Affairs, Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. Ma'am has more than 18 years of teaching experience and has published more than 40 research papers and articles in various national and international journals. She has co-authored 3 books, supervised more than 70 MA dissertations and 5 PhD scholars. Ma'am has also developed e-content under PMMMNMMT for Central University of Punjab, Bhatinda,
content for MS University, Baroda. Ma'am is also member of Curriculum Revision Committee at NIOS and OER Committee, NCTE, New Delhi. Ma'am's biodata is a very impressive one with many more things. But according to the time availability, ma'am के व्यक्तित्व के बारे में जानना जो है वो हम उनकी बातों से और ज्यादा जानेंगे और सीखेंगे. So now I cordially invite Dr. Anjali Shokeen ma'am for her deliberation on academic and administrative audit, enhancing quality in higher educational institutions. Namaskar ma'am. Namaskar, Renu-ji. Thank you, Dr. Reena, for briefing my profile. So thank you very much. And before I begin, I want to congratulate the whole team of Quality Circle, because you are taking a very nice initiative to promote all the academic and administrative things among the people. Like just I talked to Dr. Professor Tanya and Dr. Sanjay ji, who are the leaders, basically who are the leaders of this program, and they are taking so much pain for organizing these kind of programs, I think, which will be very helpful for the audience also and for us also, we as a speakers also, because we every day we say that there is a new day and there is a new learning also. Every day we learn something new, and these kind of programs, the platforms, this type of platforms helps us a lot by interacting. And since you all are very much related with, you can say you all are working in the schools in the capacity of principals, and senior professors are also there, and there is, you can say, the whole learners are there. So today, I think it will be very interactive session, and we will discuss about all the things which are related with the academic and administrative audit. So since we all are academicians, so it's very, you can say it's very important topic to discuss about that. What is this? Why we are talking about the audit, and why it is important, and what is the process? Like, because many of us, we are not familiar with the process, that how we have to apply for the NAC, and what are the different criterias which are the part of this academic and administrative audit. So these things will we will be discussing today in this session. And again, I congratulate Dr. Satyendra Gupta ji, Dr. Sanjay ji, Dr. Professor Tanya ji, who has invited me and have given me as a platform where I can interact. So thank you and congratulations. So let's begin with the session. And first of all, I want to share my PPT. Yes. So Tanya ji, I think my PPT is visible. Yes, ma'am. Ma'am, if you can just put it on slideshow mode, ma'am. Okay. Is it fine? No, not yet. We can see all these slides, ma'am. Not able to see the screen? We can see the screen, ma'am. We can see. We can see. इसको स्लाइड मोड पर करने के लिए कहा मैम ने. स्लाइड मोड में ये साइड वाली स्लाइड्स नहीं नजर आएंगी. This one, yes, ma'am. Yeah. So should I make it in the slideshow? Yes. Yes, yes. So now it's fine? Yes, ma'am. Visible. Slides are visible. You can see the first screen, the academic and administrative audit promoting excellence in higher education. Yes, we can see, ma'am. We can see. Okay. So, so this is a very important topic which Dr. Sanjay and Professor Tanya has given to me.
and it's a very challenging work on the part of universities, very challenging task on the, you can say, the academic institutions, because a lot of exercise has to be done when we want to apply for the NAC. So in briefly, in first 2-3 slides, I want to tell I think the basic things which we are familiar, but just to begin with, that we are familiar that this NAC was established in 1994 by the UGC, and the purpose of this, the purpose of establishing this NAC is to promote and maintain the quality in the higher education. So this means that how the quality education can be promoted in the higher educations, and once it is promoted, then how it can be maintained. Like this year, I think most of you are familiar with that the Guru Gobind Singh Indraprasth University has achieved the grade of A++, and earlier it was A. So we were working, I think the whole university is working for the last 2 years for filling the data, and there are so many requirements also, later on we will discuss. And these are the basic things which I think we all are very much familiar with. This NAC is a peer-based evaluation system where expert teams visit different institutions, assess against predefined criteria. The word is written predefined criteria here, means that there are certain criteria which are already given by the NAC. We, the academic institutions, we have to follow all those criteria, and we have to give the data according to them. And the most important part is of the NAC is IQAC. I think Ma'am, every, sorry, yes, sorry to yes. interrupt you, ma'am. Please, can you move to the second slide, ma'am? We can't see the second slide. Now is it visible? No, we are still on the first, your title slide. Ma'am, one slide before this. Uh, Second slide, ma'am. I think Yes, now. now visible. I think when I'm making it is in the slideshow, na, there is a problem, I think. No problem, ma'am. We are not able to see slideshow. We can see all the slides. So whatever is comfortable to you, आप वैसे कर लीजिए. कोई दिक्कत नहीं. No issues. Okay. Okay. अंजलि मैम, दो चीजें कर लीजिए, एक तो अपनी चॉइस से जैसा भी आपको कंफर्ट हो वो कर लीजिए स्लाइड्स में, और प्लस जो ऑडियंस है ना वो थोड़ा सा बाइलिंगुअल है, अगर आप उसको थोड़ा सा टारगेट करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, कुछ मैसेजेस भी Okay. 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 So sorry, Sanjay ji. I हाँ जी was not aware of. Okay, I will be. I will talk in bilingual. जी So, जैसा कि हम सब जानते हैं कि NAC जो है, it's a very important and essential component in every academic institution. And because when we say NAC, the things which come in our mind is about the quality, and it comes the credibility also, the credibility of the academic institution where we are working. So the NAC is very much related with that. And the first foremost important thing which I was telling you is about the institutional quality enhancement project, that is IQAC. In generally in short way, we always say IQAC, because in every university IQAC is there, in every academic institution IQAC is there, because this is the only department which is the basis for NAC. And the things which are like the different things, different, you can say, areas which are taken care from in the university में जो भी काम आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, जो भी क्वालिटी को सस्टेन करने के लिए करते हैं, या जो भी प्रमोट करने के लिए करते हैं, वो सभी चीजें IQAC के थ्रू ही होती हैं. Later on I will tell you about the composition also, because when we talk about the IQAC, the chairperson, or you can say the principal of the academic institution, or the director, I'm saying principal oblique director oblique, if it is a university, then the vice chancellor is the chairperson. So this means when I'm saying these are the chairpersons, so इसी से हमें पता लगता है कि कितना sensitive
ये डिपार्टमेंट रहता है because the whole university is dependent upon the IQAC. It is the only IQAC who thinks about that what are the different things which we have to promote in the academic or through the academic audit or the administrative. So all these things are looked after by the IQAC. So you can see my slide in which I have written the academic audit and the administrative audit. I think it's visible. Yes, yes, ma'am. Visible. Just so sorry, my screen is visible and I'm audible also. Hanji, madam. Yes. Okay, thank you so much because a lot of disturbance is coming from my side. So sorry for the interruption. So the title of the topic which I have given today is about the academic audit and the administrative audit. So I think it's visible that in academic audit, whenever we say academic audit, the different things which comes in our mind is about the academic programs, like what a university is having, which are the different programs which the university is running, how the teaching learning processes are going on in the university, and what are about, you can say, what is about the research activities which are undergoing. So this means different departments which are looking after uh, so sorry. Just give me 1 minute. I'm changing my room. Please excuse me. No issues. So meanwhile, Dr. Anjali is joining us back. We will also request some of the participants, if they have some questions or some doubts which you will want, she can take those simultaneously during her presentation. We'll be very happy if you can just type those in the chat box so that Reena ji and myself can take note of those questions. तो आप वो क्वेश्चंस एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में. कोई भी आपके सवाल है जो आपने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स ट्रिपल ए में देखी हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज हर साल ही कराई जाती है सभी इंस्टीट्यूट्स में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. तो जो भी आपके सवाल है वो आप अभी हमें लिख के दे सकते हैं. एंड वी विल आल्सो रिक्वेस्ट कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने कैमरास on kar le if you are well placed, and if you feel you can switch on your camera. So we will be very much happy to have you with us on screen. Yeah. Anjali ji is back. We will continue with this session. Yes. Yes. Thank you, Dr. Tania, for engaging the audience. So sorry, actually, on Sundays, Saturdays, Sundays, these kind of problems happens because we are not in the university. Na? So somebody is coming and ringing the bell, and there are so many other things. So sorry for that interruption. So hopefully now I will not again be disturbed. So yes, Dr. Tania, you have rightly said that if you are having any doubts, or if you want to ask something in between, so you are most welcome, or you can write the questions. I love to answer in the end. So after 1 hour. So in the meantime, let's begin with the session. So very quickly, I'm saying, because we all are aware that in if we say academic audit, what are the different things? So we were talking about the various academic programs, the teaching learning process, research activities, how is the curriculum, how the course content is delivered, then what are the teaching methodologies, what are the different assessment methods which we are following, and what about the faculty qualifications, or we can say we as an institution, we have to identify our own strength, that in our university or in
in our academic institution, what is the strength, what are the different areas which needs to be improved, and what are the opportunities for innovation and enhancement. I specifically has written these points because when we have to fill the form for applying the NAC, so we have to tell us about the SWOT. You must have heard about the SWOT word, that is strength, weaknesses, opportunities, and threat. So we, as a university, we have to do you can say the SWOT analysis. We have to identify our own, you can say, the strengths, the weaknesses. And in the same way, when we say administrative audit, we talk about the different things which comes under the administration, like the governance. These days e-governance is also like very much popular. Then the financial management, in which we talk about the different sources of you can say the income and the expenditure, infrastructure related things, the support services, institutional policies, and so on. So these are the different things which we consider in the administrative audit. So this is the next one is about the aim, or you can say what is the objective of academic and administrative audit. We have already discussed about that the first and foremost, or you can say the only aim of academic and administrative audit is about the quality, that how we can ensure the quality and how and what we can do for the improvement of our university or our higher education institution if we are an autonomous body. How we have to the other thing is we have to compare also with the previous grades, like what was our previous grade and now what is our target, what are the loopholes which were in between, like हमने जो है last time पर हमारा ये grade क्यों नहीं आया, हमारी जो है system में ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि जिसको हम पूरा करें तो हमें जो है better grade मिल सके. Moreover, इंस्टीट्यूट्स को अपनी ही कमियों के बारे में पता लगता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड मोर ओवर सेल्फ असेसमेंट हम इसमें करते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वी इवैल्यूएट आवर सेल्फ कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आवर वीकनेसेस एंड व्हाट आर द एरियाज व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड. मोर ओवर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट एम ये भी है कि उससे हमें ये पता लगता है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस सिस्टम जो है यूनिवर्सिटीज में कैसा है. Last May, I will also want to show you, like if you want to see the audit, or you can say the IQAC form or the NAC form of our university, Guru Gobind Singh Indraprasth University, I will show, because the word I am using here, transparency. So transparency means that one should be transparent. If here we are talking about the academic institutions, so academic institutions needs to be very transparent because they have to show everything about their university, that where they have applied, how much marks they have given, and what is the procedure. So I will share those screen also. And the next one is, here we begin with the key indicators. Like we are talking about the academic and administrative audit. So what are the different criterias? You can say ki how many criterias are there, what kind of information we have to give in this form. So we will talk about very quickly, we'll see that what are the different things. Like for example, when we talk about the academic audit, because there are two parts, NAC is divided into two parts, the academic audit and the administrative audit. So the criteria for both are there, which we have to cater. So first of all, the first criteria, the first indicator is about the curricular aspects, in which we have to see, in which we have to give the information about the curriculum design and development, curriculum planning and implementation. Look, I want to tell you, when I'm using this word curriculum design and development and curricular planning and implementation, here I mean to say that, look, generally the time period for NAC is 5 years. And in 5 years, we have to see that how many times we have revised our curriculum. The first thing, how many times we have revised our curriculum.
whether we have taken the suggestions from the expert, the academicians, what are we, whether the curriculum is having the learning outcomes, whether the students they have achieved the target which they supposed to complete according to their curriculum. What is the process which we have followed while planning the curriculum? How we have implemented the curriculum? So, look, you must be thinking that itna choti choti cheezein. Yes, these all things are to be mentioned because in this recently for the last 2 years we were working on that. So that's why we are familiar with all these things, and I am the part of that NAC committee also. Like in our department, the School of Education, we are having the curriculum, and already we are following the curriculum, but because it's a requirement of NAC that there should be learning outcomes. So within the period of 6 months, the whole university, in the whole, you can say in the all departments, every faculty has revised the curriculum in light of, like, they have to make the learning outcomes. I will show you later on that how these things have changed. Then the academic flexibility in terms of here, this flexibility we are talking about on the part of students and on the part of faculty also, that what kind of flexibility we are giving to our students, we are giving our to our faculty, the administration. So that has to be mentioned. Then the curriculum enrichment ke liye what we have done, feedback system, how our feedback system is, how we are taking the feedback from the different stakeholders. Then the second one is your teaching, learning, and evaluation, the students' enrollment, students' profile. I think these are self-explanatory. So catering to the student diversity, that how a university, we as a university, how we are catering the students' diversity, because the students, they are from the different backgrounds, and what we are doing for them. Then the teaching learning processes, how that is going, the teacher's profile and quality, that how you can say how much qualified is the teacher, because you must be familiar with the process, that if you are having like how many PhDs you are having, how many net qualified faculty you are having, how their curriculum is, sorry, no, not curriculum, how their biodata is so strong that you are depicting to the NAC team that we are having such kind of faculty. So the evaluation process हमारा कैसा है, reforms हमने क्या लेकर के आए, or one thing when I'm talking about this transparency in our university, which what we have faced, little, you can say some, you can say when the NAC team comes to the university and they give the suggestions. So this portion, the evaluation process and reforms, it was weak in our university because they have suggested us that the administration should work on the evaluation process, the examination system, because there are not so much reforms. I think Dr. Tania is very much familiar with the evaluation process of Guru Gobind Singh Indraprasth University. So I think for the last 7, 8, or I can say 9 years, there is no change. So that's why यहाँ पर हमारा जो marks है वो थोड़ा कम हमें मिला IP University को. So we have to work on that. Then the students' performance, the learning outcomes, student satisfaction surveys is also collected, because this also depicts the picture of your organization. Then the research, innovation, extension. So I think these all are self-explanatory. I'm not going to explain all these things. You are familiar with all these things. What are the extensions, activities, the collaborations, consultancy आपने कितना किया है. So that is very much important thing. Then the student support and progression, student support, progression, participation, activity, alumni engagement. A good percentage of alumni engagement is there in the NAC, because NAC always asks that आपका alumni कितना strong है, आप कितना अपने alumni की help लेते हैं, आपको कैसे जो है alumni जो है यूनिवर्सिटी को हेल्प करता है, वो स्पॉन्सरशिप देता है या नहीं देता है, या जो आपकी एलमनाई है आप उनके साथ
उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका उनको देते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को अभी करंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं या उनको हेल्प करते हैं इन देयर जॉब्स. So there are so many things. So alumni engagement is very, very important component in the NAC. So next one is administrative audit. I think I have skipped in administrative audit. So these what we have discussed about the academic things. Now the administrative audit में what are the different criteria? So जहाँ से हमने begin किया था governance and leadership in management, we have to see कि institution का vision कैसा है, leadership styles क्या हैं, which kind of style is followed, strategy development के लिए हम क्या करते हैं, faculty empowerment strategies हमारी क्या हैं, financial management, resource mobilization, then this internal quality assurance system हमारा कैसा है, physical facilities, library, IT, maintenance, institutional values and best practices. Look, this is a special report which we have to make कि हमारी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, हमारे इंस्टीट्यूशनल की क्या वैल्यूज हैं, हम किसको फोकस करते हैं, उसका एक अलग से क्राइटेरिया होता है, उसकी मार्किंग होती है, एंड द होल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन these things. Now the functions of IQAC which I told you in you can say in very beginning, IQAC जो है यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. I am also the member of IQAC in my university because there are 10 faculty members who are, you can say, the members of IQAC who works in the university and suggest the different things that what we can do in our university for the betterment. So it's an annual process. So later on, I'll tell you that in IQAC, there is one performer also, which I have not written in these slides, but in general, I want to tell you that there is one performer self-assessment form. So that self-assessment form is filled by every faculty every year, because as a faculty we have to tell every year that what is our contribution in this one year, both in the academics, in the administration also, where I was involved, and what are the different things which were looked by, you can say that looked by that particular faculty who is filling that form. So according to that, then that self-assessment form, like for example, if we are talking about IQAC, so IQAC has the primary role to collect the self-assessment form from every faculty, from every, you can say, administrative department, either that is account department or the examination department or the affiliation or any other department. So this means we can say that IQAC, if you can see at the last, the IQAC shall evolve mechanism and procedure for the ensuring timely, efficient and progressive performance of academic, administrative and financial tasks. So I think all things are covered in these three words: academic, administrative and financial. Moreover, how we can use the physical resources in best possible way, how we are dealing with the teaching and learning processes. These days, you all know that the NEP 2020, the policy is saying that we have to promote the teaching learning process, and it can be promoted by different things because the government is also focusing on the online, you can say, mode, or you can say the distance mode, because these days after Corona, we all have witnessed that there is a, you can say, big shift in our teaching learning processes and in the mentality of the students also. They also prefer कि हमें सब कुछ जो है ऑनलाइन ही मिल जाए, हम सब ऑनलाइन ही पढ़ लें. स्वयं के थ्रू जो अभी आपने देखा होगा कि यूजीसी ने एक सर्कुलर भी जो है वो सर्कुलेट किया था, आई थिंक 2 years back, if I'm not wrong, I think in 2021, a circular was came from the UGC that we have to incorporate the SWAYAMs, the MOOC courses in the curriculum. And in our university, we have already included MOOCs, and that has become, I want to share that
that is a you can say essential component. If the student has not cleared that MOOCs, तो उसको डिग्री नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे बीएड में, एमएड में there are four courses in BEd and 4 MOOCs courses in MEd. और जब तक बच्चा वो 4 MOOCs को कंप्लीट नहीं करेगा, उसको बीएड का या एमएड का डिग्री नहीं मिलेगा. So by this I want to tell you that there are so many things also which we have to follow, which the UGC is also saying, which the policy is also saying. So we have to incorporate all those things in our system. So this is about the composition which I was telling you, IQAC, because whenever we talk about NAC, IQAC comes, because IQAC is the basis for NAC, because there are a lot of things which the IQAC is doing, and IQAC is responsible for filling the NAC form and the other things also. So here in composition, you can say the chairperson is always the head. Like if we talk about the university, the vice chancellor is the chairperson, and the different persons from the industry also, from the you can see one nominee from the employers, industrialists, stakeholders, local society, students, alumni, then management, director of IQAC, of course, he is the senior most, he or she is the senior most person. So, and the representation of faculty from the different departments. So this is how this IQAC is composite. Then your so look, now we have come to the basically the form, the different we have to, if we have to apply for the NAC. So there are so many things which we have to look after, like this is the part A which the universities has to fill. These are the some basic things that, like the name of institution, institutional status, website, academic calendar, accreditation details, if we are having details of establishment of IQAC, list of special status, then whether the composition of IQAC is as per NAC guidelines, because NAC का जो format है वो भी change होता रहता है. So whenever we are applying, we have to tell कि हमने जो है इसको अभी लेटेस्ट वाले को फॉलो किया है या नहीं किया है. Look, when we have first filled the NAC form in I think in 2020, I know in 20 I think 2019 में जब हमने फिल किया था फॉर्म, तो वो हमें 21 में फिर से चेंज करना पड़ा था. क्यों? बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ नैक वाज चेंज. इन बिटवीन बीच में 1-1.5 साल हमारा जो है वो कोरोना आ गया, तो इन दैट वे हमारा नैक भी बहुत डिले हो गया. सो वाई आई एम टेलिंग यू कि नैक का जो फॉर्मेट है या जो नैक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम कुछ कुछ उसमें चेंज होता रहता है, तो वी हैव टू फॉलो द लेटेस्ट वन. सो उसमें हमें वी हैव टू टेल अबाउट द IQAC की मीटिंग्स आपने साल में कितना किया, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. देन IQAC को कोई फंडिंग बाहर से मिली या नहीं मिली, या एज अ यूनिवर्सिटी आपने कितना उसको जो है फंड्स दिए कि वो सो दैट दे कैन वर्क on the you can say to promote the quality को प्रमोट करने के लिए IQAC ने क्या क्या किया, उसको कहाँ से फंड मिला, कितना मिला. So this we have to tell about that, how much they have received, how much they have used the funds for promoting the quality in the institution. Then the plan of action जो IQAC ने लिया, कितना जो भी मीटिंग्स हुए, मीटिंग्स में क्या क्या डिसाइड हुआ, that all have to be discussed. So these all are the things. I think you must have seen all these things. So that was the part A, जिसमें basic information था. Then in part B, I think we have already discussed कि curriculum design में you have to see about कि आपने national, regional, global के needs के accordingly curriculum बनाया, कितनी बार बनाया, revisions कितने किए, जो है आपने जो कोर्सेज आपने एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के कितने रखे. आई हैव टेकन दिस लेटेस्ट वन विच वी हैव फिल्ड. सो यदि आप पुराना फॉर्म देखेंगे तो हो सकता है आपको ये कुछ पॉइंट्स ना मिले. अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप. आपको पता है कि दिस इज द आउटकम ऑफ NEP 2020 पॉलिसी, बिकॉज द पॉलिसी हैज talked about कि एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए in all the schools, in all the departments.
So likewise, in the School of Education, we have also included the entrepreneurship in the curriculum. Then choice-based credit system होना चाहिए, elective course system होना चाहिए. So this all we have included, and these are the requirements of the form also. So curriculum enrichment में जो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हमारे पास वैल्यू एडेड कोर्सेज कितने हैं, आपने वैल्यू एडेड कोर्सेज से जो है क्रेडिट्स को ट्रांसफर किया कि नहीं किया, और किया है तो कितना किया है, कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया वैल्यू एडेड कोर्सेज में, स्टूडेंट्स फील्ड प्रोजेक्ट्स में कितने गए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स उन्होंने कितना किया, हाउ मेनी इंटर्नशिप दे हैव कंप्लीटेड, feedback system, students, teachers, employers, alumni, moreover parents also. I think forgotten, it should also come the parents, because we have taken the feedback from the parents also. So ये जो feedback होता है, इस feedback के बहुत जो है weightage होती है NAC में, so that's why it's important. Then teaching learning process में I think we have already discussed about all the things. Student diversity, teaching learning process, use of ICT, teacher profile, PhD कितना है, sanction post के according आपका कितना selection हुआ है, फुल टाइम टीचर्स कितने हैं, टीचर्स को कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने रिकॉग्निशन, फेलोशिप, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पे, सो ऑल दीज थिंग्स. देन इवैल्यूएशन सिस्टम, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैसा है, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे व्हिच इज रिटन एट द लास्ट. This is very very important because it has a good marks, good weightage in the NAC. Then your criteria 3, the research innovation extension. So this I think we have already discussed. इसमें आपको पूरा डिटेल देना होता है कि आपके JRF स्टूडेंट्स कितने हैं, SRF कितने हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है या नहीं है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं, कहाँ कहाँ से आपको फंड्स मिला है, रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन कैसी है, आपकी रिसर्च के लिए आपकी यूनिवर्सिटी कितनी ग्रांट्स देती है, कितने आप गवर्नमेंट एजेंसीज से फंड्स लेकर के आए हैं, और कितना आपको जो है एनजीओ से मिला या आपकी खुद की यूनिवर्सिटी ने दिया. सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच वी हैव to tell to the NAC team, because first of all these all things have to be filled in the format, and then after at the time of physical verification all these things will be that are asked. So innovation ecosystem, then the research publication awards. So I think these we are already aware कि भी कितने teachers ने, how many teachers they have developed the e-content, number of books, research paper, PhD, patents awarded, and the so many things. And this is what in the last I have written bibliometrics of the publication during the year based on Scopus, Web of Science, H index of the university, because this is very much important for the QS ranking. जो हम beginning में बात कर रहे थे कि this year, not this year, I think few days, 1 week before, we are in the QS ranking, and it is 1401 plus. So whenever you want to Google it, so you will find that in Guru Gobind Singh Indraprasth University has also come in that list. Then your how many consultancies you have provided, extension services, collaborations. So basically earlier we have discussed the names, and now here are the details that how many MOUs you have signed, जो है आपका कितने institutions के साथ, industries के साथ functional MOU है. This functional MOU means it's not in the paper only. Actually में you are using the resources, you are exchanging the faculty also, you are involved in the faculty exchange programs also. So that's why I am using the word functional MOU. Then it's about the criteria for infrastructure and resources, learning resources. May we talk about the classroom, laboratories, equipments, yoga center, gym. All these things are like, you can say, the infrastructure facilities which you are having. And let me tell you, I don't know how many of you have visited Guru Gobind Singh Indraprasth University. We get maximum marks in the infrastructure and the learning resources things, because the team found that we are having a very good infrastructure. So we are given highest marks in the infrastructure things. We are having very beautiful campus and so many things also.
So IT infrastructure, how you can say it is related with the computers, the lab, the softwares, how many softwares we are having, and I think these are the basic things we all are familiar already. Then criteria of student support and progression, what we are doing for I think the career counseling things. Are we giving any scholarships to the students? The government, you can say we are following the schemes which are given by government, whether we are telling our students or not, because sometimes students, they are not familiar with the different schemes which the government is providing. So we as a teachers, we as an institution, we have to tell our students that what are the different grants or scholarships which are available, so that they can avail all those things. So then the next one is about mm, uh, governance and leadership management, we have already discussed. Then your financial management, the internal quality systems. So I think this I'm highlighting, these are very much important, and that's why we in the academic institutions, we generally organize the conference, seminar, workshops, then the quality initiatives, because these all are having a good weightage in the NAC thing. And moreover, if we can say, if we are talking about the quality, for promoting the quality, these things are very much required, because the faculty also needs to be upgraded. The faculty should familiar with the latest things. So that's why these all things are very much important, and that also looks that is also looked after by the IQAC of the university. Then institutional values and best practices हमारी क्या है, gender equity के लिए हम क्या करते हैं, are we having the solar energy, biogas plant, these all are the points which are the part of the form. I have not written intentionally. These are the points which I have taken from the NAC form. So these are the different things which we have to tell ki how are we having the green campus initiatives. So all these things, green audit, energy audit, environment audit, clean, and so basically for all these things, what our institution is doing. Like, are we having the borewell, or are we having the rainwater harvesting, water, wastewater recycling? All these things we have to tell to the team. Then Divyang friendly, ramp, these are the basic things we all know that. Human values and professional ethics ke liye what we are doing. So all these things. Then in the last we have to tell about, look, you can see the best practices which I was telling you earlier, that we have to mention our best practices, what we are having, how our institution is different from the others, and what is the plan of action for the next academic year. So these all are the things which we have to tell. And now these we have discussed about the different criteria, or you can say the different things which are the part of the academic and administrative audit. Although it's not very easy, you can say it's a very difficult process to understand and to go in depth of all these points, because this exercise is very tedious exercise. It's a very, you can say, lengthy process also. It takes a lot of time to complete all these things on the paper. So but I have given you some highlights, that all these things are the part of, you can say, the NAC form, in which we have to mention all these things. Now we are going to discuss about the process, that how this academic and administrative process is, you can say it, what is the process of this thing. So if you can see in this PPT, here the first one is written, that HEI registration. So that is the Higher Education Institution Register. This is the first one. You can you can have little idea, but I want to tell you in detail in the next slides, that what is the process. So after registration, the IIQA, then SSR, then SSR assessment, then PTV management, then SSR QEM declaration. I think those who have undergone with the process of NAC, they must got the clear picture that what is the process. But many of you have not, I think. You are not in, those who are not in the process of NAC team, so they have to understand by these slides that this is the first step,
that first of all, whenever we want to go with the NAC, so first step is we have to do the registration. All the higher education institution, or you can say the university or the autonomous college, सबसे पहला जो foremost काम है वो registration करना है NAC की website पर जाकर के with AISCHE reference code, because ये जो कोड है ये सभी इंस्टीट्यूशन का अपना एक कोड होता है, उस कोड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन इंस्टीट्यूशनल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है क्वालिटी असेसमेंट के लिए, वो आप जब लॉग इन करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स। एसएसआर सबमिशन करना है, प्रोसीड। सो दिस इज द जिस्ट of all the steps. Now in the next slide we will be discussing in detail. So the whole process is, you can say, the gist of all the process is these 7 points. So now we will discuss one by one. So first step is registration on the NAC website with the code. Then once this registration is completed, NAC verify करता है, validate करता है और आपको login credential देता है। So I think उस जब आपको login credential लेने के बाद you can easily access on that portal. Then after that IIQA submission आपको जो है वो करना होता है, that is the institutional information for quality enhancement. इसके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप जब इसमें लॉग इन करेंगे तो यू विल फाइंड कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। देन IIQA के 2 विंडोज सिस्टम होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, मई से जून और नवंबर से दिसंबर, तो 2 ही बार ये ओपन होता है। यू कैन सी दैट आई हैव रिटन। देन इसकी जो एलिजिबिलिटी की अनाउंसमेंट का जो टाइम होता है वो 15 डेज होता है, तो इंस्टीट्यूशंस को इस टाइम के अंदर अपना एसएसआर सबमिशन करना होता है, जिसमें वो पूरा डिटेल बताते हैं कि कैसे आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है। और यदि यहाँ पर मान लो एसएसआर सबमिशन आपने किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आपको 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं, विद इन अ ईयर आपको रीसबमिट करना होता है। सो हमारा जब व्हेन वी हैव अप्लाइड of our university, so we also have to resubmit because the time which was given in between, that was the format was changed during that time, and again we have to submit the SSR. So that's why it took long time to fill the form. Then once that SSR submission जैसे ही आपका हो जाएगा तो वो acceptance आपको मिल जाती है, तो आपको फिर आगे करना होगा SSR की पूरी जो भी आप look, I can't tell you that how many documents. I think it takes 15-20 days to upload all the documents on the portal, because sometimes I can say it's a very tedious process. This is the most tedious process. Once you all have, the whole university has, you can say, prepared the data of academic things and the administrative things. Then after, वो सभी जो I think I can't say you कि कितनी ह्यूज फाइल्स होती हैं, वो सबको आपको स्कैन करके सब पोर्टल पे उसको जो है फाइल्स को अपलोड करना है। देन उसके बाद आपकी एक फर्स्ट ऑनलाइन फीस होती है जिसको रजिस्ट्रेशन फीस बोला जाता है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, आप यू कैन से आपका जो भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा है या क्वालिटेटिव डेटा है। उसके बाद फिर आपको जो है डीवीवी प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट इज द डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, कि जो भी आपने डेटा जो फिल किया है उसमें आपको लिंक्स देने पड़ेंगे कि वो डेटा जो है नैक टीम जो है वो सारे डेटा को चेक करती है डीवीवी के थ्रू कि जो लिंक्स आपने दिए हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, वो दे आर राइट और नॉट। उसके बाद ही ये जो है आपका डीवीवी प्रोसेस के बाद ही नैक आपको बताती है कि वेदर वी विल कम टू योर यूनिवर्सिटी। यू कैन सी इन द लास्ट लाइन, बेस्ड ऑन द डीवीवी स्कोर the NAC team would decide on any one of the following. The first one is date of the peer team visit, कि वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, deferring, वो defer कर रहे हैं या disqualify कर रहे हैं institution को from having a peer team visit. So this means we can't give any false information to the NAC team. We have to be very conscious. Whatever we are telling them, it should be very truth. You can say हम
हमें झूठ नहीं बोलना है, इधर उधर की कोई चीजें नहीं बोल रही है, वट एवर वी आर सेइंग उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो वो सब जो है ये हमें डीवीवी से पता लगता है। देन योर इसके बाद फिर जब आपका डीवीवी प्रोसेस हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, SSS। यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक अलग से वेटेज होती है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, जिसमें जो है स्टूडेंट्स यू कैन से कि नैक जो टीम होती है वो कुछ सेलेक्टिव कुछ स्टूडेंट्स से फीडबैक लेती है। लाइक आपने जो भी डेटा दिया हुआ है नैक को सब दिया हुआ है आपने कि कौन से डिपार्टमेंट में आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल सब नैक टीम के पास है। तो वो क्या करते हैं, रेंडमली सैंपल चूज करते हैं और उनसे जो है फीडबैक लेते हैं कि वट एवर वी हैव रिटन इन आवर डॉक्यूमेंट्स वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो इसका जो है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का ये CGPA होता है, पूरी वेटेज होती है नैक के फॉर्म में। उसके बाद फिर ऑन साइट असेसमेंट होता है जिसमें पीयर रिव्यू टीम जो है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट में वो आते हैं, वेरीफाई करते हैं। एंड लेट मी टेल यू हियर आल्सो आई हैव रिटन दैट 2/3 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। You can see I am highlighting this line. Yes. So what I want to tell you that the data which we have already given to NAC 70% वेटेज उसकी रहती है। मतलब व्हाट आई मीन टू से दैट पेपर्स, जो पेपर आपने सबमिट किया है, जिसका आपने पूरा प्रूफ दिया है, उसको उन्होंने वैलिडेट कर लिया है, तो 70% तो वेटेज जो है आपकी, 70% मार्क्स जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है कि जो आपने पेपर्स सबमिट किया है। और जो 1/3 है दैट इज ओनली 30% मार्क्स आर इन द हैंड्स ऑफ द team which came for the, you can say, audit in the university. So this is the fixed ratio. So this means majority of the work is dependent upon the paper which you have given, and the 30% is about your physical visit which the team is making. So we have to be very careful from the, you can say, the from the paper point of view कि we are giving the true information, factual information, and all, you can say, very comprehensive report whatever we have given to the NAC team. Then after, you can say, after all these things the institution grading is to be is done, and that is dependent upon the three things which are given, I think, in the you can see the peer team report, जो टीम आपकी इंस्टीट्यूशन में आई है उन्होंने क्या स्कोर दिया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो डेटा आपने दिया हुआ है उनका, और इंस्टीट्यूशनल का ग्रेड शीट, ये तीनों मिला करके जो है ग्रेडिंग मिलती है, जो कि नैक टीम जो फिजिकल विजिट आप इंस्टीट्यूशन में, हमारी जैसे यूनिवर्सिटी में भी टीम आई थी, तो टीम जब पूरा ऑडिट करके चली जाती है, उसके जाने के 2 या 3 आई थिंक 3 वर्किंग डेज के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारा ग्रेड क्या है। Okay, so this is the whole process of you can say the academic and the administrative audit. Then this is the range which we all are, I think, familiar. Some of you are must be familiar with this thing. So like our university is A++, the highest, I think you can see 3.51 to 4 point. And the institutions who are graded with A++, तो उनको 7 years तक फिर नैक की जरूरत नहीं है। तो दिस मीन्स कि हमारा जो नैक है, यूनिवर्सिटी का जो नैक है, वो नेक्स्ट हमारा ड्यू होगा 2030 में। सो बिकॉज ऑफ दिस A++, यदि हमें A+ और ये A मिलता तो हमें 5 years में फिर से नैक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। तो दीज आर द ग्रेडिंग पॉइंट्स, जो कि 3 ग्रेड्स को मिला करके ये ओवरऑल ग्रेडिंग मिलती है। देन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट हम करते क्यों हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बिटवीन कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, एंड दिस इज अबाउट कि एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री का क्या से रहता है, पेरेंट्स, गार्जियन, रेगुलेटिंग बॉडीज, गवर्नमेंट, then the funding agencies, society, research. So these all are, you can say, these all are the stakeholders of any higher education institutions.
So everybody is getting something from the NAC, you can say accreditation directly or you can say indirectly. So this is from my side what I want to tell the different things, that what are the different criteria of academic and administrative audit. And the next thing is about the you can say the criteria we have discussed, and the form which we have already discussed, that these are the things which we have to look after in the this form. So now I want to show you one important thing of the university's profile. Just a second. Mm. Okay, let me share my screen also, so that whenever you want to see, you can also see. Hmm. So in between, you can ask me questions, whatever you want to ask me. Entire screen I have. Hmm. So you can see the Guru Gobind Singh Indraprasth University website. Hanji, yes, we can. Yes. So when you write www.ipu.ac.in, so you will find this page. And now I'm opening the website. I don't know why it's not opening. You want me to share the screen? Just a second. I I was having this SSR report which was downloaded in my laptop. So I think this you can see. Yes, yes. Yes. So this is the self-study report, SSR, the term which I used in between. This is our report, self-study report, which was, you can say, required in the third cycle of accreditation. So it is you can say available on the website also. You can see the whole details which are given. You can see the date also on which it was filled. You can say this, you can see that on 10th December 2022 this was sent to the NAC team. The executive you can say summary about the university quality policy, vision, strength, weaknesses, opportunities and challenges of our university. Because in this SSR we have to tell about our own strength, कि हमारी institution की strength क्या है, हमारी जो है different weaknesses क्या है, opportunities क्या है, challenges क्या है. I think you can see these we have written. Then criteria wise समरी वी हैव मेक, जो भी हमारा डेटा था पूरी यूनिवर्सिटी का, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन. सो दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट इज टू बी सेंट टू द नैक टीम. यू कैन सी बेसिक इंफॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो सब चीजें हम इस फॉर्मेट में हमने डाली हुई हैं. आप कभी भी इसको जो है देख सकते हैं. आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट in filling all the information. You can see the different things which we have filled. So it's open. You can see anytime by you can say logging to our university's profile. Mm, now I think uh, yes.
So thank you. This is all what I want to brief about the academic and administrative audit. So now it's time for discussion. Thank you, ma'am, for your eloquent presentation. Actually, Reena ji and myself, we are scrolling through questions both in YouTube. There are a lot of people who have joined on YouTube also, and इधर भी session में बहुत सारे लोग हैं. Okay. तो रीना जी भी आई एम श्योर आप कुछ क्वेश्चंस देख पाए होंगे. जो मुझे दो क्वेश्चंस ट्रैक हुए हैं वो मुझे लगता है कि एक बार उन्हें वन बाय वन कर लेते हैं. जब आप मूक के बारे में बता रहे थे कि खासतौर से जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में एज पर यूजीसी डायरेक्टिव्स जहां ब्लेंडेड लर्निंग की बात आई है, और अब तो ये भी है कि 40% कोर्सेज जो हैं वो बच्चे हायर एजुकेशन में ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं मूक से. सो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि क्योंकि मूक फर्स्टली क्या मूक कराना बच्चों को कंपलसरी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. और अगर हम मूक करवाते हैं तो इसके मिनिमम कितने आवर्स का होना चाहिए, ये क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में आया हुआ है ऑन यूट्यूब. Okay. Thank you, Professor Tania ji. Let me answer this question. First of all, thanks for asking this question. I don't know who have asked me, but you are the moderator, I think, Tania ji. So you are asking this question. Actually, this MOOCs concept is let me tell you the background of this. In Corona times, we all are, I think we all are familiar that how the teaching learning process goes on. And it is only the online mode which saved us also and our students also. So afterwards, UGC has given one circular about the MOOCs that every university, they have to incorporate MOOCs in their curriculum. Okay, this is the first thing. तो दिस मीन्स कि यूनिवर्सिटीज ने अपने आप से ये इनिशिएटिव नहीं लिया है, ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आया कि मूक्स जो है वो करिकुलम में होना चाहिए. और सबसे पहले जो सर्कुलर आया था उसमें यूजीसी ने कहा था कि 20% जो करिकुलम, सपोज आपका बीएड का करिकुलम 100 क्रेडिट्स का है, तो उसमें एक मैं इमेजिनरी फिगर से एग्जांपल दे रही हूँ कि यूजीसी ने जो कहा था 20%, तो 20% जब कहा मूक्स होना चाहिए तो दिस मीन्स 100 क्रेडिट्स में से 20 क्रेडिट्स के मूक्स होने चाहिए. अब ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर करिकुलम जो है, डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो 4 क्रेडिट्स के हैं, 5 क्रेडिट्स के हैं, 3 क्रेडिट्स के हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स ऑफ द कोर्स you are having in your curriculum, उससे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके मूक्स कितने होंगे. यदि आप स्वयं की वेबसाइट पे देखेंगे तो मूक्स जो है, कुछ कोर्सेज मूक्स के 2 क्रेडिट्स के हैं, कुछ 4 क्रेडिट्स के हैं, कुछ 6 क्रेडिट्स के हैं और 8 क्रेडिट्स के भी हैं कुछ कोर्सेज. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टोटल क्रेडिट्स ऑफ द करिकुलम उसको आपको देखना होगा. बट यस, यूजीसी की जो फर्स्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग इट वाज मेंशन 20%. देन अगेन आफ्टर सम टाइम another notification came from UGC and it talks about up to 40%. So this means UGC is not saying कि आपको 40% मूक्स रखना है, but what the UGC is saying कि आप 40% तक करिकुलम में मूक्स की जो है वेटेज दे सकते हैं. अब इसके भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं. बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये दिस इज शोइंग कि आने वाले टाइम में टीचर्स की डिमांड कम होने वाली है. क्यों? क्योंकि आप मूक्स इतना डाल देंगे तो मूक्स, बच्चा तो मूक्स ही पढ़ता रहेगा, उसको टीचर्स की ज्यादा जरूरत होगी ही नहीं, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा. सो इस चीज को हम लेके चलते हैं. तो दिस इज द अनदर साइड ऑफ द कॉइन कि आने वाले टाइम में क्या होगा. बट यस, आज के टाइम पे यूजीसी जो है वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, हमें पता है. हो सकता है आने वाले टाइम में, अब तो हेकी की बात हम कर रहे हैं, बट अभी एट प्रेजेंट यूजीसी इज सेइंग कि हमारे करिकुलम में अप टू 40% वेटेज जो है वो मूक्स का होना चाहिए.
अब वो यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज वेरी करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको 10% से स्टार्ट किया है, कुछ ने 20% से के साथ स्टार्ट किया है, कुछ ने 30 के साथ किया है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी शुरू करा ही नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो आपको पता है दे आर वेरी मच अगेंस्ट विद दिस डिसीजन ऑफ यूजीसी। बहुत सारे जो हैं पीछे आपने देखा होगा, आई एम नॉट नेमिंग, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, but so many universities are against UGC that इस तरीके का नोटिफिकेशन क्यों दिया है, बिकॉज हम मूक्स को नहीं लाना चाह रहे हैं। इसके बहुत ग्राउंड जो है चैलेंजेस हैं, एंड very sorry to say, in our own university, Guru Gobind Singh Indraprasth University, our students also, they are facing a lot of problems in the MOOCs courses, in completion of the MOOCs courses, both at B.Ed level also and both at the M.Ed level also. Because this was introduced first time, तो फर्स्ट टाइम में जब हम कोई चेंज करते हैं तो एवरी चेंज के साथ हमें कुछ जो है यू कैन से सम चैलेंजेस होती हैं, तो वी आर आल्सो फेसिंग दैट चैलेंजेस। सो लेट्स सी हाउ इन फ्यूचर द थिंग्स विल गो ऑन। So I think Tania ji, I have answered the question. And I would like to actually add here, ma'am, एक तो अंजलि जी, actually there is an apprehension about MOOC. ये आपने बिल्कुल सही बात उठाई, because all of us are belonging to teaching fraternity. तो when we talk तो we say कि भाई एक replacement के फॉर्म में आ जाएगा। अब MOOC में कुछ practical points here हैं which I wish to just add on is that आमतौर से लोग सोचते हैं कि कोई भी कोर्स हम उठा ले, जैसे जो भी अवेलेबल है ऑन, एंड इट इज नॉट ओनली जस्ट स्वयं, इट इज ऑल्सो बहुत ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे एडेक्स पे है, कोर्सेरा पे है, और यूडेमी है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो बच्चे कर सकते हैं। इसमें गलती जो खासतौर से इंस्टीट्यूट्स करते हैं, बिकॉज एट माई इंस्टीट्यूशन ऑल्सो आई एम engaged in NAC criteria 1. So those dynamics जो बहुत आमतौर पे लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी कोर्स को मूक से कर देते हैं, उठा लेते हैं। सो यहाँ बहुत जरूरी है ये जानना कि जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर जो करिकुलम है उसको हम स्टूडेंट को ऑप्ट आउट करते हैं कि वो कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग मोड के अलावा वो ब्लेंडेड मोड से ऑन टाइम ऑन लर्निंग से कर सके। तो वो क्रेडिट्स अर्न करना बहुत जरूरी है। बट यू नो, सीइंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन साइड, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल एग्री हियर इज कि स्टूडेंट्स को मूक में एनरोल कराना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। yes. और क्योंकि उनकी अपनी और भी तरह की प्रैक्टिकल क्वेरीज हो रही है। आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू से कि यू नो, खासतौर से जैसे आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, बट जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ ऑलरेडी द फी स्ट्रक्चर्स आर quite good enough. So Yes. students have a resistance ki why should we pay when we have paid for a classroom teaching? Why should we pay for an alternative mode? अच्छा, बच्चे अगर कर भी जाएं इसमें एनरोल, फिर कुछ उसके इंटरनल इतने डायनेमिक्स होते हैं कि कभी वहाँ एग्जाम्स टाइम पे नहीं हो रहे हैं, कभी आपके स्कीम ऑफ स्टडीज का कोर्स नहीं मिलेगा वहां पर। तो द होल एंड प्रोडक्ट इज कि बाय द टाइम आपके स्टूडेंट्स आपके कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एग्जाम्स दे देते हैं, तब तक मूक के कई बार एग्जाम नहीं होते हैं, तो आपका ग्रेड कार्ड अटक जाता है, वो क्रेडिट्स अर्न नहीं हो पाते। सो इस पे काफी काम करने की जरूरत है। आई थिंक दिस इज वन एस्पेक्ट। आई रिमेम्बर इन आईपी यूनिवर्सिटी आल्सो दिस वाज ब्रॉट इन, इट वाज अ ह्यूज चैलेंज। अच्छा, एक और मुझे इसमें मैं शेयर करना है कि ये उस पॉइंट के लिए कि टीचर्स को लगता है हम बाहर हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। मुझे लगता है बच्चों को मूव कराना भी उसका भी क्लासरूम में, यू नो, यू कैन मेक द स्टूडेंट्स एक्चुअली टेक अ मूव प्रोग्राम इन अ 45 मिनट्स पीरियड ऑल्सो। हम अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे कराते हैं क्योंकि बच्चे जब उन्हें आप छोड़ देते हैं, खासतौर से जहां पर मूक वे ऑफ लर्निंग नहीं है, इट्स नॉट सच अ नोन वे ऑफ लर्निंग कि बच्चे घर जाके पूरे दिन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के बाद फिर मूक का कोर्स भी करेंगे। तो वो उनको उस तरह की प्रक्रिया में लाने के लिए आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वी कैन बी गुड
initiators to get this. Anyway, ma'am, thank you so much for this question. I have one more, and then Reena ji will take the questions. Yes. There is a question from Shikha Sharma ji. This came on YouTube. She's not mentioned her institute's name. Ours is a self-financed teacher education college. Should we have an IQAC cell? And if we should, what should be its nature and what should be its function? So I think nature and function आप बता ही चुके हैं. बट मेन यहाँ डाउट है कि क्या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस के पास भी एक IQAC सेल बनाने की नीड है. दिस इज आवर क्वेश्चन. Yes. So thank you for the question, Dr. Nania. This question, yes, for the self-financing college also, because we all know that the autonomous colleges, जो नए कॉलेजेस हैं, जब उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब आपको कॉलेज रन करते हुए, तो आपको नैक के लिए जाना होता है. ऑल्दो अभी तक यदि हम अपनी कंट्री की बात करें तो नैक कंपल्सरी नहीं किया है. नैक ने अभी ये नहीं कहा है नैक ने कि हर एक कॉलेज को नैक प्रोसेस से गुजरना है या नैक के लिए अप्लाई करना है. हाँ, बट यस, द इंस्टीट्यूट्स हु आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द क्वालिटी, and if they want to promote the quality and the sustainability also, then the colleges are going for the NAC, because इसके benefits बहुत हैं, वो हमने already discuss किया है, क्योंकि उसके स्टेक होल्डर्स बहुत हैं. लेकिन यदि आप नैक के प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज को एक्रेडिटेशन मिले, तो आपको IQAC की फॉर्मेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप ये कहिए कि एक नोडल डिपार्टमेंट है, जो सारा आपका जो कॉलेज, अब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि आपके कॉलेज की जितनी भी एकेडमिक चीजें हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, वो उन सबका रिकॉर्ड एक जगह हो, एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जो ये सब चीजों को लुक आफ्टर करे. तो इन दैट वे IQAC इज इम्पोर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट एनी कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी. यस, थैंक यू मैम. और एक और AAA के फॉर्मेट के भी कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिवली आ रहे हैं, तो आई थिंक this actually NAC has not really given any prescribed format to my best of my knowledge कि कोई AAA का कोई फॉर्मेट हो. आई थिंक अपने ही प्रोसेसेस से हम जो की इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक अपना एक AAA बना सकते हैं. इसमें बस एक सवाल है मैम, दिस इज नॉट कम. हाँ जी, नहीं, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन. देयर इज अ फॉर्मेट व्हिच इज गिवन फॉर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट. It is available. If you search on Google, you will find it, or I will share you. If you can, ma'am, share it, because a lot of people are asking this question: ki what is the AAA format? Yes. And second thing is also कि जो AAA, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, बट आई विश इफ यू कैन जस्ट इलेबोरेट, बिकॉज ये शायद एफिलिएटेड कॉलेजेस में खास तौर से एक सवाल होगा. यूनिवर्सिटी सिस्टम में फिर भी थोड़ी सी प्रोसेसेस डिफरेंट लेवल की होती हैं. बट जैसे अगर AAA करवाना है एक सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज को, तो उसमें कॉम्पोजिशन में किसको वो बुला सकते हैं कि उनका कोई एक एनुअल एक AAA कोई करे? तो अगर आप उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो हेल्पफुल रहेगा. लुक, आप बता रहे हैं कि किसको इनवाइट कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग. देखिए, इनवाइट जो है आप, ओके, लेट मी टेल वेरी क्विकली. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट का एक फॉर्मेट होता है. वो फॉर्मेट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और यदि आप हमारा फॉर्मेट, हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो देखना चाहते हैं, जो हम लोगों ने फिल किया है, तो आप, मैं सबको बता रही हूँ, www.ipu.ac.in आप जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको वहां पर नैक के नाम से या IQAC के नाम से आपको मिलेगा. आप उसको क्लिक करिए, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमने जो है 5 सालों का डेटा, हमने क्या क्या डेटा फिल किया हुआ है, उसमें सारे आपको पॉइंट वाइज description मिल जाएगी कि what are the different things which we have filled in the academic and administrative audit for the NAC purposes, and of course that is for the excellence in the higher education. This is the first thing. Second thing you are asking about कि किसको इनवाइट कर सकते हैं. इनवाइट करने से पहले IQAC का जो मैंने आपको एक कमेटी की फॉर्मेशन बताई कि उसमें कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, तो
कुछ तो आपके फॉर्मल मेंबर्स हैं ही हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के होंगे ही होंगे। उसमें आपने देखा होगा कंपोजिशन में कुछ लोग जो हैं बाहर के भी हैं, जो आपका एक कोई इंडस्ट्री से हो सकता है, कोई एकेडमिशियन हो सकता है, कोई मतलब ग्राउंड रियलिटी जिनको पता है, क्योंकि आपके यहाँ यदि टेक्निकल कोर्सेज हैं तो ऑफ कोर्स कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो पर्सन होगा वो आपको बेटर हेल्प कर पाएगा। तो दिस इज वन वे कि आप फॉर्मल जो आप अपनी कमेटी बनाते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट की या यूनिवर्सिटी की जो कमेटी बनी हुई है, आप उसमें मेंबर्स रख सकते हैं बाहर के। इसके अलावा ये तो आपका फॉर्मल सेटअप हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कोई भी जो आपको लगता है कि जहां किसी यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में जहां पर नैक हो चुका है एंड द पर्सन्स हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, आप उनमें से किसी को सीनियर जो है फैकल्टी को बुला करके एक असिस्टेंस तो ले ही सकते हैं, उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि लुक वी आर डूइंग दिस, इफ यू कैन सजेस्ट एनी। तो इनफॉर्मल वे में तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी जो आपके नोन भी हो, आपको पता हो कि इन्होंने इस प्रोसेस को किया हुआ है, तो आप उनको किसी को भी बुला सकते हैं। एंड फॉर्मल कमेटी तो है ही है जो आपको बनानी ही है अपने इंस्टीट्यूशन में, तो फॉर्मल कमेटी के मेंबर भी होंगे, वो तो आपके यहाँ आते ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बता रही थी आपको कि आई एम मेंबर ऑफ IQAC इन माय यूनिवर्सिटी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में इट इज कंपल्सरी, हम नॉट इन, आई शुड नॉट से हमारी, इन आर यूनिवर्सिटी रेदर, जो IQAC का जो सेल होता है उसकी मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ ईयर होती हैं, विच आर you can say which are chaired by the chairperson. So like in our university, our vice chancellor has chaired all those meetings. तो उन मीटिंग्स जो 4 मीटिंग्स हैं उसमें आपको बहुत तरीके के सजेशंस मिलते हैं फ्रॉम द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपनी यूनिवर्सिटी में फिर काम करते हैं। Yes, ma'am. Thank you. Reena ji, questions? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Dr. Anjali, ma'am, I have 4 or 5 different questions which were put up in the chat box by the Yes. participants, and the questions are so different from each other. I'll take one by one. Sure. Mr. Rahul Sahu has asked a very interesting question कि हम नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं उनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट कि टीचर्स को जो अवार्ड्स मिले हैं they are counted and considered in the NAC grading. Yes, good question, because there are so many things which I think every academician hesitates to speak, like when you are talking about awards. So these awards are also in, you can say it also has become a business these days. Why I'm using the word business, because everybody knows that there is a weightage of having the awards. Like if Anjali Shaukin is having 4, 5, 6 awards, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी आई विल मेंशन एंड द इंस्टीट्यूट को भी वो फायदा होगा। Okay, so I have intentionally used the word business. Look, one award is, आप नैक में देखिए उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट जो है अवार्ड्स वही कंसिडर होते हैं जिनकी या तो आप उनका जो बैक है वो गवर्नमेंट एजेंसी होनी चाहिए या कोई रेप्यूटेड एनजीओ होना चाहिए, तो आपको उसकी वेटेज मिलती है। ऑल्दो जो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं यहाँ पर नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूंगी, बिकॉज आजकल ये बिजनेस क्यों बन गया है, बिकॉज दे चार्ज मनी। आप देखेंगे गूगल, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप गूगल भी करेंगे ना, तो यू कैन सर्च कि भाई अवार्डिंग एजेंसीज कौन कौन सी है, अब यू विल फाइंड अ लिस्ट, इतनी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है। और फिर आप जब उनको क्लिक फर्दर करते जाएंगे तो यू विल फाइंड कि भाई वो दे आर चार्जिंग मनी, कि आप 5,000 दीजिए, आप 6,000 दिए, आपको 7,000 दिए, उसमें आपको नेशनल अवार्ड भी वो दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल अवार्ड्स भी दे रहे हैं। तो दीज थिंग्स आर आल्सो गोइंग ऑन। मतलब जैसे आप ये कहिए कि पेपर पब्लिकेशन,
जो हम 10 साल पहले जो पेपर पब्लिश करते थे और आज जो पेपर पब्लिकेशन का जो स्कोप है, आई थिंक वी ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद द कंसेप्ट कि यूजीसी के उसका फिर duplicate copy, online publication, they charge money for the publication, and there's so many things. So likewise, this award has also become this kind of things, because of course I am saying that कि awards जो है आपकी यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल इन आवर यूनिवर्सिटी नियर बाय 250 फैकल्टी मेंबर्स आर देयर, तो नैक में हम सबसे पूछा गया था कि आप लोगों को कहाँ से कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो उसमें जो रिकॉग्निशन होती है बेसिकली वो नेशनल के लिए होती है, और जो एक आपका क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे लगेगा कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल वे है कि आप गूगल पे जाइए, आप ये देखिए कि अवार्डिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उनकी डिटेल को सर्च करिए, जिनका जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, जो दोज द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सिस्टम, दे आर ऑथेंटिक वन, go for that, not for the private players, because these days it has also become you can say a business. They are charging money and they are giving you awards. And moreover, one award is in the university also, within the university also, the university system is also giving you awards. It is also giving you the recognition on the basis of what you have done. For example, if I talk about myself, I got an award from the university because we have worked a lot in the time of corona, when everybody was sitting in the home, but we were working. So our university has also given us the recognition. So that kind of award. Then you can say according to the publication also, there are so many journals also who are giving you the award. So I think that should be backed by something. It's not a game of only you are giving the money, you are paying fees and you are getting award, because that is very common. That is also very common these days. ओके, थैंक यू मैम। राइटली सेड कि अवार्ड्स के लिए जो नेशनल एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वो देख लें जरूर। और ऐसे बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते भी हैं, डिफरेंट स्टेट्स की तरफ से भी आते हैं मैम, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी आते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज फ्रॉम सावित्री माथुर मैम, और ये क्वेश्चन मेरा भी है बिकॉज आई एम इन द सेम कंडीशन इन अ कॉलेज। उन्होंने पूछा है कि यूजी कॉलेज हमारा है तो उसमें कोई रिसर्च वर्क जो है वो नहीं है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यूजी कोर्स है, यूजी रिसर्च वर्क कैसे कर सकते हैं, मतलब एक मुझे थोड़ा सा इसको आप मैम मुझे लगता है कि वो शायद ये जानना चाहती हैं कि क्योंकि जब पीजी क्लासेस नहीं होंगे तो वहां पर पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो उनको नहीं मिलते होंगे, तो किस तरह से वो रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि यूजी कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं वो नहीं अलाउड होते हैं। नहीं अलाउड होते हैं। मोर ओवर जो है गवर्नमेंट भी ये बोलती है कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पर थोड़ा वेटेज भी कम ही है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें होती हैं, रिसर्च जो होती है वो आपका खुद का एक पैशन भी होता है। इट्स नॉट कि आप यदि पीएचडी नहीं करा रहे हैं या आपके साथ पीएचडी स्कॉलर्स एनरोल्ड नहीं है तो आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग भी हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हैं, तो इट्स नॉट अबाउट कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं कि हमने 5 को पीएचडी करा दिया है और अभी 3 मोर एनरोल्ड हैं तो सिर्फ हम उन्हीं के साथ रिसर्च कर रहे हैं। yes, we are doing research with them also, but apart from that हम अपने लिए हम इंडिविजुअल रिसर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम जो है हम एंगेज रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं 1, 2, 3 रिसर्चेज हमारी इंडिविजुअल लेवल पर भी हो। तो उसके लिए तो आपको ये लगाइए कि खुद का पैशन होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इन कमिंग डेज इफ यू वांट टू गेट द प्रमोशंस, लाइक यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो एक क्राइटेरिया होता ही है, कैस जिसको आप बोलते हैं, करियर एडवांसमेंट स्कीम होती है हमारी, कि आप जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करते हो तो 12 इयर्स के बाद आप जो है एसोसिएट बनते हैं, और फिर एसोसिएट लेवल पर 3 साल काम करने के बाद आप प्रोफेसर बनते हैं। यानी कि टोटल 15 साल की जब आपकी जॉब हो जाती है तब आप प्रोफेसर बनते हैं। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर भी जो 12 साल का जो ड्यूरेशन है, 12 इयर्स का जो ड्यूरेशन है, उसमें भी 2 जो है स्टेजेस हैं।
वहां पर भी आपको प्रमोशन मिलता है। तो आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप जो है आप इफ यू वांट टू एम हाई टू अचीव मोर, तो यू हैव टू बी वेरी मच इन्वॉल्व इन द रिसर्च वर्क। इट्स नॉट कि भाई सिर्फ पीएचडी है तभी आप जो है पीएचडी करा रहे हैं तो रिसर्च करेंगे। yes of course that is an additional thing which is good, but यदि नहीं है यूनिवर्सिटी सिस्टम में, if you are not working, तो हम ये तो नहीं सोच सकते क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो ये एक अपना आई थिंक मुझे लगता है एक सेल्फ पैशन भी होना चाहिए कुछ करने के लिए। तो इन दैट वे यू कैन डू रिसर्च। एंड यस आपको थोड़ा सा ये भी लग रहा होगा कि जो जो एजेंसीज हैं जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं वो भी सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ही देती हैं, तो प्राइवेट में उसका भी स्कोप थोड़ा कम है। बट स्टिल जहां पर कम फंडिंग के साथ भी आप जो है कर सकते हैं। और आजकल तो कोरोना के बाद तो ऑनलाइन डेटा कलेक्शन हो गया है, तो उससे सबको ही बहुत हेल्प मिल गई है। Okay, thank you, ma'am. Ms. Pooja Kumari has asked a question. When they are signing for MOU with any agency for sharing research and development in the field of information, so she wanted to ask the question about how to have a SOP for that. What will be the SOP for that? Yes, For very signing good. MOU. Yeah. Yes, very good question. The first thing is, whenever you want to sign a MOU with, you can say, a university, a college, or industry, or any other platform, first of all, the both parties, like जिनके बीच में MOU होना है, वो दोनों पार्टीज बैठ के ये डिसाइड करती हैं कि हमें जो MOU करना है वो किस चीज को हम फोकस करके MOU करना चाहते हैं। क्या हम दो इंस्टीट्यूशंस जो है, मैं ए और बी वर्ड यूज करना चाहूंगी, एमओयू बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी दोनों मिलके साथ में रिसर्च करना चाहते हैं, क्या वो दोनों कोलैबोरेटिव फॉर्म में रिसर्च करना चाहते हैं, या ए जो चाहते हैं कि हम बी इंस्टीट्यूट में हम खुद जाएं और बी इंस्टीट्यूट से ए में आए, फैकल्टी एक्सचेंज हो कि हम वहां जाकर कुछ डिलीवर करना चाहते हैं या वो हमारे यहाँ आके डिलीवर करना चाहते हैं, या हम अपने स्टूडेंट्स को वहां भेजना चाह रहे हैं कि आपके बी इंस्टीट्यूट में ये सब चीजें अच्छी हैं जो हमारे ए में नहीं है, तो वी आर सेंडिंग अवर स्टूडेंट्स टू बी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर लाइक फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ, या इन वाइस वर्सा। या हम जो है कुछ करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं, या हम ए और बी मिलके कोई अच्छी सी कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, कोई सेमिनार करना चाह रहे हैं। तो these things which I have shared you, these can be the basis for MOU, कि आप दोनों पार्टीज ए और बी बैठकर पहले म्यूचुअली ये डिसाइड करें कि हम जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वो किन चीजों पर कोलैबोरेट करना चाहते हैं। फिर उसको जो है उसको ऑन पेपर लाने की कोशिश करें हम कि यस हम इस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक स्पेसिफाइड एक फॉर्मेट होता है कि जिसमें ये बताया होता है कि ये स्पेसिफिक लैंग्वेज रहेगी और वही लैंग्वेज को हमें जो है फॉलो करना होगा। ओके, तो वो फिर स्पेसिफाइड, लकीली आई एम हैविंग you can see this. Yes, ma'am. Memorandum of understanding, and Yeah. at the bottom you can see Guru Gobind Singh Indraprasth University. Yeah. So this is one document which is a very huge document. I think these all pages are there. So in this you can say what I want to share. Look, if you can see, this is the list जो हमारी यूनिवर्सिटी का एमओयू किसके साथ है, ये लिस्ट है। फिर हमने इनके साथ, इसमें कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ इंडियन भी हैं, ये देखिए। तो इट्स अ लिस्ट जिसमें जो है एमओयूज की कॉपी जो है लगी हुई है। और वी एज अ फैकल्टी या जो भी इसको देखना चाहता है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमने इस यूनिवर्सिटी के साथ या इस कॉलेज के साथ हमारा एमओयू है।
तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे एमओयू हुआ है, तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू डिसाइड एंड देन उसको हम पेपर पे लेकर के आते हैं। और जो है उसमें आप एसओपी की बात कर रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार जो होते हैं वो साइन करते हैं, इफ द अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो, तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रार विल साइन दैट एमओयू, और वो स्टैम्प पेपर पे उसको हम करते हैं। एंड these basically I have given you little idea that how MOUs can be made. Thank you so much, ma'am. I will take a last question. It is from Dr. Jha, and he has asked whether the MOOCs other than Swayam can also be done by the students. उन्होंने कहा है कि जैसे कि कोर्सेरा के या आईआईटीज के या कुछ प्राइवेट अगर लोगों के मूक हैं, तो क्या उसको भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं और ये 40% ऑनलाइन लर्निंग में काउंट होंगे? Yes, let me answer this question. आप मूक्स करना चाहते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मूक्स कर सकते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, कि जब हम स्वयं से मूक्स करते हैं तो क्योंकि वो गवर्नमेंट सेटअप का है, वो सिर्फ उनका जो फीस है नॉमिनल फीस वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। आई थिंक 1000 या 1200 कुछ ऐसा फीस है। उसके बाद आपको दे गेट द सर्टिफिकेट, मतलब आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो नॉमिनल फीस देनी है आपको, और कोर्स तो करना ही है। जो बाकी जो आप जैसे कोर्सेरा है, यूडेसी है, बहुत सारे जो हैं प्लेटफॉर्म्स जिससे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें सिर्फ ये है कि कुछ कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। इफ यू आर विलिंग टू पे दैट फीस, आप फीस पे कर सकते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं है, तो यू कैन डू एनी कोर्स। बट यदि आप यूजीसी की गाइडलाइंस पढ़ेंगे ना, तो यूजीसी ने सिर्फ लिखा है स्वयं कोर्सेज। आप सर्कुलर, आप जो है यूजीसी की साइट पे जाके देख सकते हैं, 2 सर्कुलर्स उनके हैं। फर्स्ट सर्कुलर में उन्होंने अप टू 20% की बात करी थी, और सेकेंड सर्कुलर में उन्होंने अप टू 40% की बात करी थी, और उसमें वर्ड यूज किया है स्वयं। तो इसलिए हम भी वी एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, क्योंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वी कांट से कि आप हमने स्टूडेंट्स को कि आप कोर्सेरा से करिए या कहीं और से करिए। तो वी हैव गिवन you can say the instructions to our students कि आपको स्वयं से ही करना है कोर्स। तो हम जो है सिर्फ स्वयं के कोर्सेज के लिए ही जो है अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है हाँ, स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से किसी भी प्लेटफॉर्म से मूक्स को कर सकते हैं, इट्स देयर ओन चॉइस। Thank you, ma'am. Thank you so much, Dr. Anjali, ma'am, for describing the process of assessing academic institutions' efficacy and efficiency, evaluation of academic programs and activities in such detail. And I'm very much sure that all the participants have gained a lot by attending your session, and all the queries which they raised have been resolved too. Now it is my request to Dr. Sanjay Kumar Chaudhary, sir, President CTPD India, as well as Professor and Principal, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad, UP, for his inputs. जी थैंक यू रीना। अंजलि मैम, आपका सेशन एक तो बहुत अच्छा लगा आज मुझे, और इतने कम टाइम में मुझे लग रहा है मतलब जैसे हमने 10 सेशंस रखे थे ना, पूरा रिवीजन हो गया एक कंप्लीट, जितना भी उससे रिलेटेड। और सबसे अच्छी बात यह कि आप लोगों को A++ मिला है, तो वो आज आपके सेशन से पता भी चल रहा है उस चीज का, कि बड़ा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, और उसके जो आंसर्स जिस तरह से आपने दिए बहुत अच्छा लगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारा ये वाला सेशन है, हमारे इस कंप्लीट क्वालिटी सर्कल के प्रोग्राम को एक लेवल ऊपर लेके चला गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, काफी चीजें नोट भी कर रहा था, फिर उसके आंसर्स भी आ जा रहे थे। मैंने कहा इसको लिखना बंद कर देता हूँ मैं, कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो एक तो मैम स्वयं पर जो बात हो रही थी अभी मूक्स कोर्सेज की, मैंने पर्सनली ना कोर्स एरा से, और जब नेपटेल हुआ करता था तब, और उसके बाद स्वयं आ गया तो नेपटेल भी उसका पार्ट हो गया, तीनों से कोर्सेज मैंने किए अलग अलग। पीजी लेवल के भी थे, तो जो इंटरेस्ट ऑफ एरियाज होते हैं तो ऐसे भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पे कोई ना कोई कोर्सेज कर लेते। तो मैंने देखा जो एक
क्वालिटी ऑफ कोर्सेज है, आप एंजॉय जो करेंगे। अगर मैं 1 to 3 की कैटेगरी में रखूं तो उसको कोर्सेरा को नंबर 1 पर रखूंगा, नंबर 2 पर नेपटेल को रखूंगा और तीसरे नंबर पर स्वयं को रखूंगा। फिर कई बार मैं ये देखता हूँ कि जैसे ना किसी कॉलेज में सारे टीचर्स हैं तो एक ये प्रेशर होता है कि सभी लोग ना कोर्सेज डेवलप करो, यस, सभी लोग रिसर्च पेपर, करो, मतलब जो सभी लोग सारी चीज करो ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। आएंगे ही आएंगे। हाँ। यस। और एक क्वेश्चन बीच में आया था, आपने भी खैर उसको एड्रेस किया कि अगर 40% तक हम स्वयं पर आ जाते हैं, जो क्रेडिट कोर्सेज हैं वहां से लेने वाले, तो टीचर्स को कई बार ना अपनी जॉब्स को वो लगने लगता है। तो मैं अभी रिसेंटली देख रहा था इस बार का सीयूटी का जो रिजल्ट आया, उसके कुछ न्यूज़पेपर्स में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था। तो उसमें था कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बच्चे इस बार अप्लाई कर रहे हैं, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जो भी हो। तो इस तरह के जो स्टेप्स है गवर्नमेंट का, आई थिंक टीचर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जल्दी इंप्रूव नहीं हो सकता एजुकेशन के लिए। तो वो जो 40% का स्पेस कहीं ना कहीं कम होगा जो फेस टू फेस क्लासेस हैं, तो मेरे ख्याल से जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको मिलने में आसानी रहेगी एक तरह से, कि हम नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज कर सकते हैं। टीचर्स को तो ऑलमोस्ट वही पढ़ाना है। अब नेक्स्ट से रिलेटेड मैं बात करूं, मैम आपने काफी सारी बातें की, मुझे काफी अच्छी लगे। आपने कुछ चीजें ट्रांसपेरेंसी को लेके की, कुछ चीजें इंडिकेट किया कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ठीक है, मतलब चीजें किस डायरेक्शन में और कैसे जा रही हैं। कुछ जो मैट्रिसेस बात करूंगा, जैसे अवार्ड्स वाली बात हो रही थी, कंसल्टेंसी वाली बात, बड़े मतलब ग्राउंड लेवल पे देखो तो कई बार ना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं लगता चीजों का, फिर ना कॉमर्शलाइज होने लगती है और फिर दूसरी साइड में जाने लगती है चीजें। एक बड़ी अच्छी लाइन हुआ करती थी पुराने वाले मैनुअल में, अब तो नहीं है, कि उसमें एक लाइन होती थी कि भाई आप हमें ये बताइए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है आपकी, जो स्टूडेंट्स फीस दे रहे हैं वो उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है। मतलब बच्चे ने 50,000 रुपए दिए, तो उसमें से कितने पैसे आपने खर्च किए इसके ऊपर एजुकेशन के, चाहे वो टीचर्स की सैलरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव की हो। वो लाइन किसने कब गायब करी मैनुअल से, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और उसमें कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट वालों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, तो डेफिनेटली वो तो उस काउंटिंग में कहीं आएंगे नहीं, उस तरह से देखा जाए तो, अगर फीस को लेके करें। जो थोड़ा सा लोअर तबके के, या जो मैं कहूंगा कि वो इंस्टीट्यूशन जहां पर सिंगल या डबल कोर्सेज हैं, उनकी भी फीस उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो आज के टाइम का जो कमर्शियल, उसमें जो प्राइवेटाइजेशन है, स्पेसिफिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं या टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो वो अपना ऑनलाइन एमबीए भी आप तो देखेंगे तो 4 और 5 लाख चार्ज कर लेते हैं। ऑनलाइन एमबीए की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो यस। तो वो जो पर यूनिट कॉस्ट था, जिसमें ये था कि भाई अगर तुमने 4 लाख चार्ज किया है, तो इस पर एक स्टूडेंट के ऊपर कितना खर्च किया, कितना परसेंटेज, और उसके बेसिस पर एक अच्छी खासी मैं कहूंगा कि एक वेटेज रख के कि भाई यूनिवर्सिटी को जो ग्रेड मिलेगा नेक का, ये दिखाइए कि मैक्सिमम पैसा खर्च आप स्टूडेंट पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कहीं और कर रहे हैं। एक तो ये चीज मिसिंग है सबसे बड़ी, जो मुझे नजर आती है, जो कहीं भी नहीं है मैनुअल। दूसरा बात आती है टीचर्स के सेटिस्फेक्शन की। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें हम उसमें करिकुलम को टाइमली अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का सर्वे भी वो मांगते हैं हमसे पूरा का पूरा लिस्ट, की भाई हम स्टूडेंट्स को ओटीपी भेजेंगे या मेल करेंगे जैसे भी, और 50% स्टूडेंट्स को फीडबैक देना चाहिए। टीचर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, उससे कोई पूछने को तैयार क्यों नहीं कि तुम्हारी वर्किंग कंडीशंस क्या है, तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये वाला ड्यूरेशन है 2022 से 2030 तक जो जाने वाला है, जिसमें सारे चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो स्कूल में हो या हायर एजुकेशन में हो, क्योंकि दोनों तरह के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो टीचर जो स्टेक होल्डर है, उससे कोई पूछने को कहीं भी ना, उससे वर्किंग कंडीशंस को लेकर कोई फीडबैक है ना। नेक कहता है कि सभी टीचर्स की मेल आईडीज हमें दीजिए, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, उनको बाकी चीजें किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है इंस्टीट्यूशन में, वो सेटिस्फाई है कि नहीं, वर्कलोड ज्यादा तो नहीं है, वो स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग है, और मेरे ख्याल से
ये बहुत प्राइमरीली मैं कहूंगा कि एड्रेस होनी चाहिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में आपको अ, बहुत सारे टीचर्स ना बड़े स्ट्रेस में, प्रेशर में, बहुत उस तरह की चीजों में देखने को मिलने वाले हैं। यस, तो आप मानते हैं बिल्कुल। ऐसा है कि या नहीं, सब ठीक चल रहा है? ये नहीं क्वेश्चन। नहीं 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 संजय जी, जो आपकी चिंता है वो जो है इट इज देयर, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीजें मुझे भी लगता है कि कुछ तो प्रेशर बिल्ट होगा, जो हम आज के दिन भी देख रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट महसूस भी यूनिवर्सिटीज में भी है, मतलब वो प्राइवेट में बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सभी है। जगह पर प्रेशर है। इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट और प्राइवेट, बट ये जो प्रेशर है ये हम लोग खुद भी देख रहे हैं। जी जी। हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड समटाइम्स हमें भी लगता है कि हम भी उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जितनी हेल्प हमें करनी चाहिए, बिकॉज there are so many other factors also which are like which are very connected with this. So yes, so I think we all have to see the things कि हम कितना कैसे हेल्प कर सकते हैं, कितना हम हमारे हाथ में है। बेसिकली हमें ये भी तो देखना है ना कि व्हाट आर इन आवर हैंड्स, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। और मैंने ये चैट बॉक्स अभी सामने ओपन किया है, तो इसमें somebody is writing कि salary is most important factor of teachers satisfaction. So this is also uh, one thing. So बहुत तरीके के प्रेशर हैं जिससे we are also going on, और आने वाले टाइम में हो सकता है these will become more concerns, या हो सकता है हम अंजलि मैम, इसमें मैं सैलरी को हटा भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत पुराने टाइम से इशू है, तो इसको, चलता आ रहा है। उस हाँ वेरिएबल को हटा देते हैं, उसके बाद बाकी वेरिएबल्स की भी बात करें। क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी या कुछ आती है तो आंख बंद करके हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि रिवर्स में फीडबैक संजय जी भी। देखो, आई डू एग्री विद योर पॉइंट। अब देखिए विद इन द आई थिंक द पीरियड ऑफ 4 to 5 years, 2 times we have revised our curriculum. हमने मूक्स को डाला पहले, बीच में प्रॉब्लम्स हुआ, जो अभी हम बात कर रहे थे एग्जाम, क्योंकि अब एग्जाम एनटीए लेता है, एनटीए का अलग सिस्टम है। फिर हमारे स्टूडेंट्स ने मूक्स में 2 में एनरोल कर लिया, फिर डेट शीट आती है तो पता लगता है कि एग्जाम भी क्लैश हो रहे हैं। फिर क्लैश हो रहे हैं तो फिर हमने फिर उसके लिए फिर से एक एसी से पास करवा के फिर कुछ चेंज लेकर के आए। अगेन अब जो लेटेस्ट जो करिकुलम है उसमें हमने फिर रिवीजन कर दिए हैं कि अब हम सेकेंड ईयर में मूक्स को रखेंगे ही नहीं। इनफैक्ट अब तो फाइनल हो गया है कि सेकेंड ईयर में कोई मूक्स नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में मूक्स होगा, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में होगा। सो दैट कि एनटीए यदि एग्जाम लेट करती है या क्लैशेस होते हैं, तब तक बच्चा, जब 2 साल कंप्लीट उसके होने वाले होंगे तब तक रिजल्ट उसके हाथ में होगा। तो दूसरा, फिर जो अभी हम बात कर रहे थे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात हमने करी, लर्निंग आउटकम्स बनाने की बात करी। फिर पॉलिसी, एनईपी पॉलिसी ने बोल दिया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के कोर्सेज को हमने एड ऑन किया। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पर बनाए। तो इस तरीके से आई डू एग्री विद योर पॉइंट कि आपने कहा कि पॉलिसीज आती हैं और हमें फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। यस, वी आर इन द सिस्टम, तो हमें फॉलो करना भी पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि इसके कुछ इश्यूज होंगे, बट स्टिल फिर हमें लगता है कि चलो इश्यूज होंगे तो फिर सॉर्ट आउट करे जाएंगे एज एंड व्हेन द टाइम विल कम। और जितना पॉसिबल हो पाता है उतनों को हम करते भी हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, मिलके सब कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। हम्म। रीना मैम, आपका। Thank you so much, Dr. Sanjay sir. Thank you for putting your concerns before the resource person and the audience as well. And now it is a privilege to have with us Dr. Sachendra Gupta sir, Chairperson, CTF Delhi NCR Chapter. Sir is Professor and Dean, School of Education, Galgotia University, Greater Noida, UP.
And the SIR's university has received a very good NAC grade recently too. So I Yes. request Dr. Satyendra Gupta sir to please share his experiences. Thank you, sir. Dr. Satyendra Gupta sir. सर अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट पे हैं आप। अच्छा सर, सत्येंद्र सर अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता सर। जी जी मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रीना मैम मुझे समय देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर अंजलि जी। पूरा सेशन सुना आपका, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. नाम Thank सुना you. था आपका, मुलाकात नहीं हुई है आपसे। अच्छा लगा आपको सुन के, आपको देख के, और कोशिश करेंगे जल्दी आपसे मुलाकात हो। Sure, sir. Sure. और नेचुरली नेक पे जो बात की है आपने, और तो इस समय जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट भी कंपेल कर रही है। तो अभी हमारे यूपी में भी लेटेस्ट में बरेली यूनिवर्सिटी A++ लेकर आई है। सीसीएस Many congratulations to you, sir. तो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, लखनऊ, गोरखपुर, तो दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, और मैं गलगोटिया से कनेक्टेड हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने अपने लिमिटेशन से अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन सबको इस सिस्टम में, इस अम्ब्रेला के अंडर में आना ही आना है। सो गवर्नमेंट जैसे भी आप एग्जांपल दे रही थी, क्यूएस रैंकिंग का, इंटरनेशनल रैंकिंग है, और उसमें आईआईटीज वगैरह ने अपना रैंक ओन गेन किया है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना एक शेयर किया था फेसबुक पर, दे गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। Yes. तो एक्रेडिटेशन क्यों जरूरत है, ये तो ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। और कम से कम इस प्रेशर में, चाहे प्राइवेट ओनर हो चाहे गवर्नमेंट हो, बोथ आर सपोर्टिंग द इंस्टीट्यूशंस। Yes. अभी केवल इतना काम था, सरकार ने एक बिल्डिंग पकड़ा दी, आप इसको पढ़ाइए, इसका यूज करिए, एंड रेस्ट छोड़ दिया कि अब जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन जब स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की बात आती है, संजय जी का पॉइंट बहुत वैलिड है। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे तो हो रहा है, पर वेयर इज द टीचर सेटिस्फेक्शन सर्वे? क्योंकि टीचर्स जो गवर्नमेंट सिस्टम में है, 4 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली सैलरी में अभी वो भी परेशान हैं, और हम जैसे प्राइवेट में जिनको 40-50 हज़ार रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी परेशान हैं। तो मनी तो एक साइड है ही है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी और बहुत सी बातें हैं जो कि टीचर को मोटिवेट करती हैं कि आप अपना पूरा दिल लगा के पढ़ाने में समय निकालिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया था रिगार्डिंग दैट कि एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वाले पूछे थे रिसर्च के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेचुरली पर्सनल रिसर्च के लिए तो कभी कोई मनाही है ही नहीं। आप पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके भी अब रास्ते निकल रहे, लाइक दैट यू टॉक्ड अबाउट द एमओयूज। तो एमओयूज के थ्रू भी आप ऐसे कॉलेजेस से आपस में जुड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं, कि कम से कम, जैसे मेरे पास भी लोग बात करते हैं, सर को गाइड तो बनवा दीजिए, तो हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो हमें को गाइड बना दीजिए। तो इस तरह के एक्सप्लोर कर सकते हैं कंडीशंस को। और इवन एनईपी 2020 एक जगह बात आती भी है कि इट इज सजेस्टिंग टू मेक अ क्लस्टर ऑफ द कॉलेजेस, Yes. इंस्टीट्यूशंस। तो ये पॉइंट मुझे अभी याद आ रहा है। तो इस Yes. तरह के अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अपने गवर्नमेंट सिस्टम वाले तो आपस में बना सकते हैं, प्राइवेट अपने आपस में बना सकते हैं। चूंकि प्राइवेट में थोड़ा मालिकों की नाक बीच में आ जाती है, गवर्नमेंट में उतना नहीं आती है। तो क्लस्टर्स, यू कैन मेक अ क्लस्टर। तो आपस में, जो उसमें लिखा भी है कि सराउंडिंग में 8-10 किलोमीटर के जो कॉलेजेस हैं, रेडियस में हैं, वो आपस में मिलके, भाई मैं इसमें कम हूँ, आप उसमें कमजोर हैं, एक अंधा एक लंगड़ा आपस में मिल जाएं, तो एक कंबाइन करके हम उसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो Yes. नेचुरली एनईपी 2020 के गाइडलाइंस में देखूं तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत मेहनत लगी है। और चूंकि ये गाइडलाइंस सजेशंस है, रूल रेगुलेशंस नहीं है। रूल रेगुलेशंस तो अब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं उसके बेस के ऊपर। तो
उसने बहुत ओपन छोड़ के रखा है पूरे एजुकेशन सिस्टम को। और अभी मैं यदि बात करूं, वी आर कनेक्टेड विद द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो एनसीटी भी कंपेल कर रहा है कि वाई यू आर कीपिंग इट aloof और इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वो भी कंपेल कर रहा है कि धमकी मिल रही है कि आपको बंद कर दिया जाएगा, अदरवाइज यू कम कन्वर्ट इनटू कंपोजिट। तो पर्पस वही है कि हमारे पास में एक्सपोजर्स हों, हमारे पास में वेरियस डिपार्टमेंट्स हों, अलग अलग तरह के टीचर्स भी एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीईपी शुरू हो रहा है 2023 से, और आईआईटीज ने भी अप्लाई किया था, उनको भी अप्रूवल मिला है। लेकिन सरप्राइजिंगली मेरी नज़र में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया हो इन विच द आईआईटीज आर इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द आईटीईपी डिपार्टमेंट। आप में से किसी की नज़र में आया हो तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने किसी भी आईआईटी, जो 4-5 आईआईटीज के नाम आते, किसी का ऐड ना तो उनकी वेबसाइट पे सर देखने आपने को मिला सर है। आपने आईआईटी खड़गपुर का चेक करते हैं आप, अभी जा चुका वो, उन्होंने इनवाइट किया था आईआईटी खड़गपुर। हाँ, तो उसका Yes. मैंने उस टाइम पे नहीं देखा होगा, हाँ लेकिन नहीं देखा, वो हाँ, उन्होंने तो इनवाइट किया था टीचर्स और हाँ, तो अलग अलग दूसरे। खड़गपुर है और उसका कई चारे ने किया था। तो मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में तो नहीं था, वेबसाइट पे रहा हो, आके चला गया हो 15-20 दिन में, लेकिन डिमांड नहीं निकली है। ऐसे ही जितने भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने आईटीईपी दिया है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी आप देखेंगे तो आपको टीचर्स की डिमांड नहीं मिल रही है। कुछ तो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट्स में थे टीचर्स, तो वहीं के वहीं एडजस्ट हो गए हैं। तो मेरा पॉइंट उठाने का ये मतलब था कि गवर्नमेंट, चूंकि गाइडलाइंस है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हमें फॉलो करते हैं हम लोग, और इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें ले लेकर नए नए इनोवेशंस लेकर आते हैं। और एक बात जो आती है, जैसे नेक के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, तो जो दो जो अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं ऑलरेडी, दो जो अंदर सिस्टम, तो ये पैरामीटर तब बनते हैं जब ऑलरेडी लोग इसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है। नथिंग इज न्यू। जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जितने भी इसके अंदर पैरामीटर्स के बेस पे हमें आज एवेलुएट किया जा रहा है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट ने, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी ने उनको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जो हम देखते हैं जब बगल वाला कर रहा है तो आप क्यों नहीं करते, तो उसको वो अपने सिस्टम में लेकर आ जाते हैं कि नहीं भाई अब आप सबको ये मूव की बात आई है। अभी आपने अवार्ड्स पे बहुत अच्छा आपने रिएक्शन दिया था उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट ने तो नेक में लिख दिया कि भाई आपको अवार्ड मिले तो बहुत अच्छी बात है। अब लोगों ने उसके लिए दुकानें खोल दी, आप आई हम आपको अवार्ड दे देते हैं। तो उनका तो पर्पस है कि क्वालिटी बढ़े। और नेचुरली सबको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे राष्ट्रीय जो कुछ टीचर्स को मिलते हैं वो लिमिटेड है। स्कूल टीचर्स को थोड़े ज़्यादा मिलते हैं जब हमारे टीचर्स डे पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। और डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी आप देखें तो बहुत कम मिलते हैं। और सबको पद्मश्री तो मिलेगा नहीं। तो उन्होंने बनाए हैं कि आप अपना बार ऊंचा करिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम तैयार। सेम वे अभी केयर की बात भी आई थी, जर्नल्स की बात आई थी, उसमें स्कोपस की बात आ रही है। स्कोपस से भी ऊपर स्टैंडर्ड्स की जर्नल हैं या उसके साइड में क्वालिटी लेवल ऑफ पब्लिक पब्लिशर्स हैं, लेकिन स्कोपस की अभी हम लोग बात करने लगे, तो उन्होंने लगा कि नहीं स्कोपस में पब्लिश बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अब इतने सारे फेसबुक पे आप देखें या पर्सनल में देखें, ईमेल में देखें, इनविटेशन आ रहे हैं कि यू पे अस, वी विल पब्लिश योर पेपर इन द कंसर्न जर्नल। तो एक बात मुझे और एक संजय जी याद आ रहा था, जैसे सीबीएसई में आजकल सिस्टम हो गया है, इस साल तो मैंने थोड़ा कम देखा है कि द 100% अचीवर्स, इस बार की लिस्ट थोड़ी मुझे लगता है शायद छोटी है, यदि कोई रिसर्च करे या उसको एनालिसिस किया होगा। अदरवाइज लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर टू बिफोर लास्ट ईयर, आप देखें पिछले 5-10 सालों में हर बार बवाल होता था कि भाई सीबीएसई सबके 100 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो ये स्थिति अब नेक की भी हो गई, सबको A++ क्यों मिल रहा है। तो अगर वो ओपन now we प्लेटफॉर्म have पर नहीं learned बोला जा सकता, लेकिन ठीक है आप। नहीं, तो now we have learned the system, तो we have understand the system, so that's why we are working in that area or that way, कि आपको जैसी भाषा पसंद आती है वैसा ही काम कर रहे हैं, तो that's why we are getting the grade। Yes. सेम वे सीबीएसई का था, पहले बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था। हमारे जमाने में 60-70-80% आया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और आप थर्ड क्लास कहलाते if you are not having more than 75%। तो समय है, समय परिस्थिति के अनुसार है। तो बट एज पर द
ओपन है, मैडम ने पूरा शेयर किया, SSRs अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, नेक की पूरी गाइडलाइंस अवेलेबल है, तो देन वी शुड अंडरस्टैंड। यदि हम केवल नेक पे ही बात करेंगे तो मैम बहुत अच्छा लगा आपका सेशन मैम, पूरा संजय जी ने तारीफ करी दी थी, तो मैं उसमें रिपीट नहीं कर सर रहा मैं नहीं नहीं, लास्ट बस तारीफ क्या, बस हम सब एक दूसरे से लर्न ही करते हैं। संजय ने भी बड़ी अच्छी जो है, संजय जी ने काफी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी शेयर किया। इनफैक्ट आपने भी पूरा कंक्लूड कर दिया जिस्ट सेशन को, कि हमारे जो कंसर्न्स आजकल क्या चल रहे हैं और किस एरिया में हमें काम करने की जरूरत है। और आई थिंक हम तो टीचर एजुकेटर्स हैं ही, तो हमें तो अपना दिल दिमाग कान सब खोल के ही रखना है और देखना है कि कैसे हम काम कर सकते हैं। अभी और इसमें एक चीज थैंक यू। देखिएगा कि मुझे लगता है नेक के लेटेस्ट जब भी वर्जन आएगा नया या कुछ करेंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा ओबी। हाँ अभी ओबी एनबीए तो इसके ऊपर काफी काम करता है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अभी मैंने देखा था नेक में अपने टाइम पे जब हम लोगों ने फिल किया था, तो भाई ओबीए के ऊपर बहुत ज्यादा बात वो भी नहीं करता है, या उतनी उन्होंने अभी इसको डेवलप नहीं किया ओबीए के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है नियर फ्यूचर वी विल वर्क ऑन द ओबी, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अभी भी काम तो शुरू हो ही गया है उतना ऐसा। ज्यादा नहीं है, सीओपीओ हाँ मैपिंग उसका अचीवमेंट उतना हाँ नहीं है, लेकिन एक टच है। लेकिन अब वो मुझे लगता है क्वालिटी पे जाएंगे तो शायद उस डायरेक्शन में वो ज्यादा उसमें काम करने बिल्कुल की यस, कोशिश और करते आने हैं। वाले टाइम में और ज्यादा फोकस हो जाएगा। क्योंकि और हर स्टूडेंट 100 नंबर ला रहा है, तो भी वो भी यदि आप फॉलो करते हैं तो भी उससे पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्ट कोर्स वाइज अचीवमेंट कैसा है और क्या है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, एक चीज को लेकर और खास रहा आज का सेशन। जी मैं देख रहा था 11-10 पे ट्वीट किया यूजीसी के चेयरमैन ने, जो हम कंसर्न कर रहे थे उसको लेके कि 40% स्वयं की बात कर रहे हैं ना, ई यूनिवर्सिटी एक्ट की बात की है, अभी ट्वीट किया 11-10 पे। हाँ तो हाँ। अब देखिए कि उस डायरेक्शन में चीजें जिधर सोच रहे हैं ना टीचर्स की, क्यों ज्यादा हो रहा है, वो तो होगा ही, बस रोल चेंज होंगे हमारे, और कुछ नहीं है। अभी डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इस बार आना था, लेकिन अभी तक कुछ पेपर नहीं, में तो न्यूज नहीं है। 11-10 पे अभी ट्वीट किया है जो चेयरपर्सन है यूजीसी के, कि ई यूनिवर्सिटी एक्ट टू रिवॉल्यूशनाइज एजुकेशन, यूजीसी चेयरमैन। तो इस पे भी मेरे ख्याल से काम शुरू हो गया है। तो एक्ट पे काम शुरू कर दिया होगा उन्होंने, एग्जैक्टली एक्ट मतलब ये फाइनलाइज आएगा, कर दिया है। कंफर्म है, इसमें कोई इफ और बट नहीं, नहीं है कि आगे यूनिवर्सिटी आएगा। तो आनी है, यूनिवर्सिटी तो आनी है। मतलब ये चेंजेस होंगे, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और अच्छी बात है और क्योंकि देखिए, एक एक चीज और मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूंगी, कि जैसे अभी हम क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो और हमारी आप सबको पता ही है कि जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जी हमारे यहाँ पर जो है डिस्टेंस मोड के कोई प्रोग्राम्स नहीं थे, लेकिन अभी इस साल जो है डिस्टेंस का एक स्कूल जो है ऑन पेपर्स स्टार्ट कर चुके हैं, और अब वर्किंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक साल में हमारी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस के कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जी दिस इज ऑल्सो वन रिकमेंडेशन विच इज गिवन बाय एनईपी। नहीं, वो आपको मिलेंगे क्योंकि आपका एंड एंड वो नैक में प्लस प्लस आया है, तो देन यू विल अप्लाई टू यूजीसी, देन दे विल गिव यू द परमिशन टू स्टार्ट द यस ऑनलाइन कोर्सेज, वो ऑनलाइन यस, कोर्सेज के लिए ना, यस। already we have sent the application for that। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ ओपन एंड डिस्टेंस जो है डिपार्टमेंट स्कूल का वो भी खुल जाएगा। अब तो सब कुछ जी Thank you, Dr. Satyendra Gupta, sir, for your comments and suggestions. Now, to conclude the session, I invite Professor Tanya Gupta, ma'am, convener of this program, Secretary General, CTPD, India. She is Dean, School of Education, K.R. Manglam University, Gurugram, Haryana. I request ma'am for her concluding remarks and to propose vote of thanks. Professor Thank you, Tanya, Doc- ma'am. Thank you, Dr. Reena, ma'am. Firstly, for taking this together, this Quality Circle program. Thank you so much. Dr. Anjali, ma'am, on behalf of CTEF, Delhi NCR chapter, as well as CTEF, CTPD, India, तहे दिल से आपको शुक्रिया कि आपने आज एक इतना थैंक यू। एंगेज्ड सेशन दिया है।
बहुत सारे क्वालिटी सर्कल के सेशन हो चुके हैं, बट आज अंत तक हमारे पास 100 पार्टिसिपेंट्स बने रहे। तो मुझे लगता है कि इतना एंगेज्ड डिस्कशन था, तभी पार्टिसिपेंट्स छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हाँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स मे बी डिले होने की वजह से आफ्टर द फीडबैक लिंक इज शेयर्ड फिर चले जाते हैं, दैट्स ओके। बट 2 घंटे एक एंगेज डिस्कशन में रहना, और यूट्यूब पे भी बहुत लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। So at the outset, I would like to first extend my gratitude to you. Thank you so much for sparing time and Thank you. sharing Thank with you us. for inviting me and giving me this platform. It's been a journey, and विशेष तौर पे आपके लिए एक खास जगह है। तो मुझे आज लगा कि आज AAA पे हमें बात करनी चाहिए। तो I know you have a lot of responsibilities at the university, but nevertheless, thanks for joining us and taking this session. Or like the president of CTPD, Dr. Sanjay ji, he has very rightly said that आपने एक तरह से पूरा एक recap of जो हमारे 8 sessions थे, वो आज आपने कराया सेशन में। एक्चुअली जो AAA है, ऑडिट है, तो ये एक अपना एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ही है, along with some external auditors as you mentioned, कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकें कि हमारे किस तरह से वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, और हमारे जो थ्रेट्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक आपने ये, और फिर आईपी यूनिवर्सिटी का भी आपने लैबोरेटिवली बताया। SSR ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में है, तो ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो हमारी बेंचमार्किंग यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनसे भी बहुत सीखते हैं। तो जो यहाँ सवाल प्राइवेट और गवर्नमेंट का नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज एक पर्टिकुलरली स्लैब के अंदर कैटेगराइज हो चुकी है, वी शुड गो थ्रू देयर SSRs, एंड हमेशा आइडियाज मिलते हैं दूसरों के काम को देख के। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ एनहेंसिंग क्वालिटी. Yes. So this has been very nicely said. The issues which Dr. Sanjay ji you have raised, I would like to thank you for being a motivation and always a hand-holding support to do any sessions. जो आपने टीचर्स की ओपिनियन की भी बात करी कि NAC को से कंसिडर करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, आई थिंक दिस बिकॉज मुझे आज खास तौर से बहुत खुशी हो रही है कि हम जब क्वालिटी सर्कल का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्वालिटी सर्कल में जो क्वालिटेटिव इश्यूज हैं, अगर वो नहीं एड्रेस होंगे तो फिर इसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे अब हमारा फीडबैक तो कॉलेजेस में भी लिया जाता है, वैसे तो टीचर फीडबैक फॉर्म भी होता है, या NAC की टीम आके हमसे बात भी करती है, हमारी सैलरीज की भी बात करती है, हमारे वेलफेयर पॉलिसीज की भी बात करती है, बट हम में से कितने लोग वहां बोलते हैं? सो देर आर ऑफ कोर्स इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं बोलते, बट फिर भी बोलते हैं, तभी चीजों में सुधार आता है। और हमेशा ये नहीं है कि जो चीज प्रोमलगेट हो गई है वो सही ही होती है, and that is why documents are put on the public domain. Like even NCT puts its documents on public domain, or the UGC also puts it. तो वहां पर as a responsible community हमें पढ़ना चाहिए, और हमें अपने responses वहां पर मुझे लगता है दर्ज करने चाहिए। तो ये एफर्ट ही ये है कि हम आगे इसको लेके जाएं और अपनी voices को पहुंचाएं। So thank you, Dr. Sanjay sir, for bringing out a very important point on the teachers' satisfaction. And Professor Satyendra sir, who is the advisor to CTPD and who's the chairperson of CTF Delhi NCR, sir, always very nice to hear you, your views. बहुत elaborative, क्योंकि आप बहुत सारे processes में involved हैं अपनी university में, तो आप भी जानते हैं कि कितने ऐसे विषय, और आपने कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट किया है कि क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो, आई स्पेशली लाइक्ड इन योर एड्रेस व्हेन यू सेड कि 70% वाले भी कभी बहुत ग्रेट हुआ करते थे, अब तो 90 और 95 की दौड़ है। तो दौड़ देखनी है हमने। एक्चुअली मुझे लगता है गवर्नमेंट के ऊपर भी एक इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं। वी आर ऑल इन द गेम ऑफ कॉम्पिटिशन, वी आर इन टू द मैड रेस। मैं हमेशा इस वर्ड को हर प्रोग्राम में क्वालिटी सर्कल में तो बोलती हूँ कि सभी अपने अपने लेवल में एक मैड रेस में हैं। तो हाँ, एवरीबडी इज रनिंग, एंड
और फिर जो सबसे, मैं तो कहती हूँ टीचर से भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा जिसके लिए ये मैड रेस चल रही है, अगर वही सेटिस्फाइड नहीं है तो वी नीड टू री एक्सप्लोर की मैड रेस है क्या है। आई मीन अवार्ड्स ले लीजिए या एक्सटेंशन एक्टिविटीज ले लीजिए, और कहीं ना कहीं जो दुर्गति हमारी टीचर्स की हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस्ड हैं, क्लासरूम्स में हम फोकस नहीं है, स्टूडेंट्स को मतलब हाउ वी हैव टू डू इट, ये हमारा काम है, बट इसके लिए हमें समय चाहिए। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आई फील कि हम अपने नेशनली हम अपने इंस्टीट्यूशंस से उठ के यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और सोल्यूशंस को लेके आ सकते हैं। यही पर्पस है इसे चलाने का। अदरवाइज this is not just like an ordinary webinar that we want to do. So अपने व्यूज लेके आए और let's work it out together and raise our voices for the betterment of our children. अगर बच्चों में सुधार आएगा, प्रोसेसेस ठीक रहेंगे, फोकस ठीक रहेगा, तो आप भी इंटरनली एज अ टीचर खुश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच टू ऑल दी स्माइलिंग फेसेस जिनके कैमरास खुले हुए हैं, तहे दिल से आपका आभार। और जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। आई होप यू ऑल फिल्ड योर फीडबैक। रीना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग टुगेदर and taking every program along. And also our other members, Dr. Jugnu, who could not be here due to some reasons. Dr. Shweta ji, she is joined, and बहुत सारे और हमारे साथ लोग जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, you raised your Yeah. Yes, Tanya ji, I raised my hands. Actually, I want to say something about this quality circle. So you people, I think you are doing selflessly work for the welfare of the society. So that really I liked a lot, because this is the work which you are doing for your own satisfaction and for the academic fraternity. So I must congratulate Professor Satyendra Gupta ji, Dr. Sanjay Kumar ji, you, Tanya ji, Reena ji, and the other persons who are involved. I think you were mentioning one name, Jugnu ji. So I don't, I think हम कभी मिले नहीं हैं, तो मैं उनको नहीं जानती हूँ. Thank you everyone. All the best and congratulations. And my sincere thanks to all of you for inviting me and giving me this platform where I can, where I have shared some my views. So thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank And you. together we will take this forward. And सभी का साथ होगा तो कुछ बहुत अच्छा करेंगे. Thank you so much. And Thank you, to ma'am. all the participants, please ensure that you fill your feedback form. Certificates will be given to you within 3 days. Do not worry, the certificates will reach you. And please fill the feedback. We will have very soon, we will be having the last session of Quality Circle also towards the end of this month. And इसके आगे Quality Circle को आगे ले जाने के लिए हमारी एक कोशिश है, और हम चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या क्वालिटेटिव बातें हमें करनी है, उनको आप लेके आएंगे, क्योंकि ये एज आई सेड, ये एक ऑर्डिनरी वेबिनार सीरीज नहीं है। यहाँ जो मुद्दे जो आप वहां नहीं बोल सकते, मिलके हमें एज अ कम्युनिटी यहाँ बात करनी है और इसको प्रस्तुत करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि 10 सेशन के बाद आगे जो क्वालिटी सर्कल का डायरेक्शन लेके जाना है, वो हमारे सारे साथ जो साथी जुड़े हैं वो ही इसको लेके चलें। एंड वी इनवाइट मोर एंड मोर पीपल टू कम अप and join us in this this effort. Thank you so much. Namaskar and have a good Sunday, all of you. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Thank you, everyone. तानिया Thank मैम, एक आपने भी बात कही है, कभी इस पे बात करेंगे रिगार्डिंग द टीचर्स। अभी आपने बात की थी, एक पॉइंट बोला था, वो टीचर्स प्रेशर की भी हम लोग बात कर रहे थे। तो रिगार्डिंग नेक की बात करें तो क्राइटेरिया 6, इसका मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता हूँ। तो दिस इज इन द फेवर ऑफ द टीचर्स टू मेक यू बेटर लर्नर एंड टू हेल्प यू टू फॉर योर प्रमोशन। नेगेटिव साइड तो है ही, लेकिन पॉजिटिवली देखें तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनाने में क्राइटेरिया 6 बहुत हेल्प करता है। Yes. बिल्कुल। जी सर।
Thank you, and Thank you, sir. we can end the session. Thank you, ma'am. Thank you, Anjali ji. Thank you so much.